Two bowlers can bowl 2 overs each. This is what the rules and regulation, especially for the semi-final. And after winning the toss, captain of Nazar ninth block elected to field first against Shine Bantwal, and Shine Bantwal opening batters already they made their way to the middle of the pitch. Umpires and two very good umpires so far did a great job in this particular tournament. Day number one, Sunday to Monday to Tuesday, and now it's a Wednesday. It's not so easy condition for the umpires, but so far all three umpires, along with these two umpires, Arif Jokate, they are done a great job for the success of this cricket tournament. No single doubts, no single black dots so far in this tournament, and done a great job. And thank you very much once again for the three officials for their contribution for the success of this cricket tournament. Iqbal, Gori Young Boys, Nasir Bajal, and Arif Jokate. And at the same time, my friend Mr. Gopi in the definitely has got entertained you in our last 3 days along with myself and our scorer Faisal, as well as Shan as in the computer scoring for King Sports, and Rizwan as well as Jalil. Everyone is contributed for the success of this cricket tournament. Thank you very much once again. Back to the game. Imran will going to start the proceedings. Right now, with wicket balls. First ball, it's going to be a confident looking start there from the right-hander batsman Salam. Salam is a key player, and so far in this tournament, he's got an outstanding journey. And out of 3 matches, he got 35 runs. And even though one match he got a golden duck, but the 2 matches he scored 35 runs at an average of 17.5 runs per match for innings. And he's a man is a lookout for in this big semi-final. If he able to contribute from the bat, the Shine Bantwal definitely got opportunity. But another 9th block so far in this particular tournament, they are been outstanding, and they doesn't want to lose the opportunity to come back and get the place in the finals. Here is Imran, right over the wicket. Disant tries that one upishly, but quite safely down to deep long on region. And before the fielder from the wideish long on to cut it off, ample time for the batter to complete the single. So Asif is off the mark. The both opening batters off the mark with a single, and Isham is the batsman, not Imran. Did the correction. Isham is the bowler. So bowling right arm over the wicket. So there is a square leg, short mid wicket, deep mid wicket, mid on, mid off, extra cover point, back point, deep wideish long off. This time against the line, swinging that one, ball went towards the deep backward square leg region before the fielder from the mid wicket region to run across to his right to get the ball. Here is the batter Salam, got a couple of runs. This time he's swinging that one across the line off the delivery, and he got that couple of runs. With that couple of runs, covered Muzan to 4 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. So a lot of changes in the field now. After that, seeing the stroke there from the batsman, a little bit long off fielder going towards extra cover region, deep extra cover region, outside the line of off stump, and the first over, which is really going very well from Isham, and the 5 runs, 4 runs, which is scored by both the batters, 3 from Salam, 1 from Asif, altogether 1 dotted delivery. Now umpire Iqbal having some conversation with the squalak umpire Isham. Back this bowling mark. Isham has got a doubt in the mind what kind of conversation is between umpire. So after getting a clarification, is back to his bowling mark. Right arm over the wicket, balls to Salam. Salam this time going for the. Oh my goodness! It's definitely
going to be a danger. It's definitely going to be a danger for Salam. I don't think he will going to survive here. I don't think he will going to survive here because of the quick work done by the wicketkeeper behind the stump. He is in trouble now. So that umpire asking for the third umpire to get the result. And wait and see how it's going to be. It's definitely going to be a very close one. And looks like the Salam will go into little bit struggling, but we need to see the exact picture of this stump out, whether the batsman is safe or not. But it is going to be a crucial wicket. Absolutely, it's going to be a crucial wicket. Now, technicians of King Sports will going to get the best result of this match, best result of this stump out. Always going to be a. Sometimes it's very difficult. So out is the call from umpire. Stumped out. Salam is back. And this definitely going to be a disaster because Salam just I want to see that in a replay. The Salam is definitely wanted to play the reverse sweep. By playing that reverse sweep and batsman doesn't know where the ball is. He thought ball is went somewhere, but the ball is not went somewhere, but ball is very near to the wicket keeper. But it's too late for Salam to see that the wicket keeper completes the job. Definitely it's going to be a disaster, isn't it? Just I want to see it in a replay again. The what really things happen. The batsman going for the reverse stroke, and by taking that reverse stroke, might be the batsman a little bit absence of mind that ball went somewhere else. But ball is of course unfortunately very near to the wicketkeeper, and wicketkeeper completes the job. First wicket back into pavilion of Shine Bantwal, and captain today Salam is really not able to shine for Shine Bantwal in a big match semi-final. But nothing much to bother about. Naufal is one more recognized batsman. This time, chip that one. Ball is in there. Opportunity for the fielder to take the catch, and he taken a wonderful running catch. The wonderful running catch taken there by Sahil, who is standing at in a deep long off region. It's not a so easy catch, I mind you, because of course ball is in there for a while, but not really in the area of long off field. He completes the catch down at deep cover point region. He need to cover the ground a lot from long off to deep extra cover region, and he completes a very good running catch. Just look at that one in replay. The where is coming from, it's a long way from long off to deep extra cover region to complete that catch, and because of that ball is in the air for a little time. Just look at that. That will give a lot of time for the fielder to get in under that ball and taken a very good catch. So back to back 2 wickets in that over. Isam strikes very well in his first over, picked up 2 valuable wickets, and that means he is on hat-trick, but that hat-trick will going to continue for the next over, because he picked up 2 wickets in the final last 2 deliveries. And when you are coming to ball the second over of his quota, then the hat-trick will go into remains for him, opportunity of getting a hat-trick for the first ball of his second over. It's a broken hat-trick, what you call as a perfect cricketing language is concerned. So here is again change in bowling. Sahil, and this time first ball, it's definitely the big shot, but umpire not satisfied. There might be the ball just going a little bit outside the line of leg stump, and that's why umpire not interested. But good shot there from Sahil to start with the second over of the power play. The first over of the power play, only 4 runs scored and 2 wickets back into pavilion, and the new batsman now. Afrid is in non-strikers end. The very young talented batter. This time across the line. It's not a good thinking there from Asif, because the line of the delivery outside the line of off stump. But he wanted to get the stroke down to onside region. And
he completely beaten because of little extra bounce for the batter when the batsman going for across the line of the delivery. Misses it completely. Wicketkeeper so good behind the stump, and there is no chance at all for any run. So far, wicketkeeper of Nazar ninth block is done a great job behind the stump. Even the wicketkeeper of Nazar ninth block. Everyone is so good behind the stump. Sahil again, bowling with a short run up. Right arm over the wicket bounced. Asif flicks that one off his legs down to short fine leg region to get the single. Before that ball hitting the advertisement banner down at fine leg. And with that single Skoban moves on to 5 for the loss of 2 wicket. Muba, maybe the Mubarak will be the name of the wicketkeeper behind the stump. But everyone has got a nickname. And it is a specialty of South Canara district, especially Karavali and coastal area. We are getting the nicknames for everyone. And Muba is behind the stump, and here is the bowler. Right arm over the wicket delivers. Sahil to Afrid this time across the line, swinging that one. A chance of run out, and he survived. He survived it twice in one ball. One is a leg before wicket. Of course, ball is impact of the line outside the line of off stump. Umpire rightly so. The impact of the line is the outside the line of off stump, and that's why umpire not called LBW. Good decision. At the same time, second opportunity in the run out, and if it is a direct hit, I think is all over for Afrid. He's a key man, and he played a fantastic game of cricket for his team in the last 2 matches for his team. Whenever his team is required some big shot, whenever team is required some responsible knock, Afrid is got it, but job which is not yet over because this is a big semi-final. They need to perform outside and off stump. Beautifully bowled. What a fantastic delivery there from Sahil. He has been very impressive in this tournament with his very tidy line and length. Even the batsman Asif wanted to drive the ball, but he's not giving opportunity for the batsman to freeze his arm. That's the speciality of that bowler. We know exactly what batsman will going to do, and he's bowling as per the condition required. Again, nicely done. A huge gap between cover point and the bowler, so that Asif managed to get the single tidy over, and fantastic over which is comes to the end after completion of over number 2. Then searching for the right track, Shine Bantwal, and they got a very slow start, shackling start. There's 7 on the board without loss of any wicket. Let me get 7 for the loss of 2 wicket, and 2 wickets in the sense as wickets of the huge wicket, the wicket of Salam, as well as the wicket of Naufal, which is back into pavilion. So we'll wait and see. Will Isam will going to continue, and Isam is continuing. So that broken hat trick, what we are talking about, we are now will going to continue here. If Isam will going to get the wicket here, he will be the hat trick wicket getter. So far only one bowler, I think so, has got hat trick in this tournament, and now Isam has got opportunity to get the hat trick in a big semi-final. And the fielding is spread out, and so many bodies out there in the deep. On a deep backward square, like deep long on, wideish long on. Deep long off is there, and one fielder now from mid long off to coming straight to long on. Deep wideish long off. Deep cover point. A very interesting field set here for the right-hander batsman Asif, keeping 5 fielders in the onside region, 4 fielders in the offside region. Here is Isam. Hat-trick delivery. Flum in front of wicket is gone. This is a hat-trick for Isam. Just like I mentioned about, this is a broken hat-trick because he's picked up 2 wickets in the last over, 2 deliveries. And he got a hat-trick here. Absolutely terrific performance. Magnificently bowled. This is a flum. Absolutely flum in front of wicket. Umpire has got no hesitation at all in his mind. Just look at that one in replay. The bowler is bowling almost not that much of wide of the crease, but look at the line of the delivery, which is right on the middle stump. Batsman across the line wanted to get that one on the onside region, missing it completely, and back into the pavilion. And Gopi, outstanding performance, isn't it? Getting a hat-trick in the semi-final, do-or-die matches, and against Shine Bantwal. Of course, Shine Bantwal, just like what the name he got, the Shine Bantwal,
They throw they're shining very well, but in this particular semi-final, they are really struggling. Outstanding bowling performance there from Isham. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया यहाँ पर ब्रोकन हैट्रिक का प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज इशाम। और जहां तक सवाल है, रिक्वेस्ट द 12th मैन प्लीज टू बी रिपोर्टेड हियर, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट ब्रोकन हैट्रिक फ्रॉम इशाम। और 3 गेंदों में 3 विकेटें प्राप्त कर चुके हैं। पिछले ओवर के 2 गेंदों में 2 विकेट और इस ओवर के पहली गेंद में 1 विकेट वो प्राप्त कर चुके हैं। अगली गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त गेंद को खेलना चाहा और चूंकि 1 रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा। और निस्संदेह सतीश यहाँ पर इस ब्रोकन हैट्रिक के बदौलत अब नजर 9th ब्लॉक इस वक्त एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ। Absolutely. Whenever the bowler is getting a hat trick, that means it's definitely going to galvanize the level of confidence of other players, isn't it? And Isam, everybody knows his ability and potential. He's been an outstanding bowler. I watched him as my commentary career, and watching him a lot of time bowling. He's a really very disciplined bowler, and one who got consistency in his line and length. It's not so easy. And especially for the tall bowlers, again outside the run fraction, went for the sweep shot. Afrid will going to get the single. He got a little bit bat onto that, so with that singles covered, numbers are 9 on the board. Consolidation is much required here from Shine Bantwal after losing 3 valuable wickets. The wicket of Salam, Asif, oh my goodness, all our big wickets are back into pavilion of team Shine Bantwal. Again, the ball is in there for a while. Catch it is a call, but ball definitely landing very safely over that point, and the cover point fielder Sadaqatullah is trying his level best to go back, to run back to take the catch, but this ball is going away from the 2 fielders. One more addition, with that addition scoreboard numbers on to 10 on the board for the loss of 2 wicket. Isam again, right arm over wicket, went for the big swing of the bat by playing a switch it. Afrid is so good in that stroke, but this time Isam is know exactly what batter will go into do here. Of course, he's bowled at the same line what batsman loves to play, loves to get, but because of that extra pace in that ball, the batsman has got no time to react to that stroke. Nice looking drive there from Afrid. Very brave and gutsy batsman. I really loves the attitude of this man Afrid so far, because he's never looks like he's in under pressure. When he was batting, he's very freely batted, and now one more time it's really required from him that one more good innings for his team, because his team is struggling. And Gopi, 3 overs completed. After completion of 3 overs, Shine Bantwal 11 on the board, and just looks like his run rate is not that much of healthy enough, isn't it? The quite understandable that they lost 3 valuable wickets. That's only because of the opening bowlers did a great job for team 9th block. The winning the toss is not important, Gopi. After winning the toss, implementing the game plan strategy is so important, and I think the bowler justifying the addition of their captain. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, टॉस जितना जरूरी होता है लेकिन उतना जरूरी नहीं होता है जितना उस टॉस जीतने के बाद जो रणनीति है उसे कार्यगत करना। तो यहाँ पर टॉस जीतने के बाद जिस रणतंत्र के साथ यहाँ पर खिलाड़ी उतरे थे नजर 9th ब्लॉक के, उस रणनीति को पूरी तरह यहाँ पर कार्य रूप में लाते हुए, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो 3 ओवर में एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए सिर्फ 11 रन प्रदान कर चुके। 3 टॉप एंडर्स बल्लेबाज पेविलियन वापस लौट चुके। 3 विकेट इशाम के खाते में जाते हुए ब्रोकन हैट्रिक का इशाम ने प्राप्त किया है इस मैच में, और इस ब्रोकन हैट्रिक की बदौलत इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा शाइन बंटवाल अपनी सही राह को तराशता हुआ, और चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज की गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला। इस वक्त स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में 1 रन मिलेगा, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन सिर्फ मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। निस्संदेह जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है शाइन बंटवाल का, तो कम से कम 40 का आंकड़ा उन्हें यहां पर पार करना होगा। दे हैव टू क्रॉस द मार्क ऑफ 40 at least at this situation in the stipulated 6 overs if they have to put on a good total in front of the opposition side. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज की ओर की यह गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त स्टेयर करना चाहता अंतिम क्षण में, लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई। लेग कटर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला। साहिल इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद स्पिन होती हुई घुमाव लेती हुई टिप्पा खाने के बाद फील्डर के पहुंच से बाहर इस वक्त निकल चुकी है, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और जहां तक सवाल है
जोरदार स्ट्रोक्स का, तो इस वक्त कोशिश तो जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन लेकिन गेंदबाज नजर नाइन्थ ब्लॉक के इसका कोई मौका प्रदान नहीं कर रहे हैं बल्लेबाजों को। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, थोड़े से सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा चूंकि, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। द्वितीय सेमीफाइनल मैच वाईएफसी ट्रॉफी 2023 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है वाईएफसी बजाल नंतूर मैंगलोर ने। और जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करते हुए इस बार हल्के से गेंद को खेल दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद पहुंची, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता एक रन का Performance in the last two matches. Losing his wicket in the early stage of the innings is a little bit of a drawback here for Shine Bantwal. And one more is the last hope of this team, Shine Bantwal, to come back, to bounce back. It's all up to this man. Afraid is in the middle. He's a kind of batsman who can hit the big shots. He's got a potential. He got all the technique what need to be implemented to get the big shot. And wait and see, Afreed and his partner Nazim will go into change the gear. Changing the gear is so important, Gopi, here onwards. Taking it to the top gear is so important. If we're going to get a speed, the acceleration is so important here. And wait and see how well they will go into get the acceleration in remaining 2 overs. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर गेंद गियर को बदलना बिल्कुल जरूरी बन चुका है, और अपने टीम की गाड़ी को इस वक्त टॉप गियर पर लाना जरूरी हो चुका है इस वक्त बल्लेबाजों के लिए। 2 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर बटोरना जरूरी हो चुका है, और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में अपने टीम की गाड़ी को टॉप गियर पर लाने में सफल होते हैं बल्लेबाज या नहीं। तो जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो इमरान इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, और स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार अफरीद, और यहाँ पर उनके ओवर के पहले गेंद लेकर तैयार। कुल मिलाकर 14 रन बन चुके हैं, 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। और इस बीच इमरान अपनी ओवर के पहले गेंद लेकर तैयार, तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी इस बार, अपील, लेकिन गेंद मैं समझता हूं लाइन के बाद ब्लॉक के, तो यहाँ पर गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, इस बार राउंड द विकेट गेंद फेंकी थी, लेकिन ऑन टारगेट गेंद बिल्कुल अपने निशाने पर पहुंचते हुए, और आखिरकार बल्लेबाज को इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तो एक बार फिर से इमरान तैनात राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा विकेट कीपर इस वक्त चूके, और गेंद को जब तक शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड किया जाता लेग बाई के रूप में 1 रन प्राप्त हो चुका है। लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर, जबकि ओवर नंबर 16 रनों पर, माफ कीजिए, 16 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर कुछ बातचीत यहाँ पर चलती हुई, और जहाँ तक सवाल है खिलाड़ी का, तो गेंदबाज एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, दोपहर का वक्त लगभग 4 यहाँ पर बचते हुए, और निस्संदेह यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा, इस मेगा श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के संघर्ष इस वक्त जारी है। इस बार बेहतर गेंद थी, विकेट से हटते हुए गेंद को इनसाइड आउट क्रिकेट खेलना चाहता, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 16 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, तैनात राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर, 1 रन फिर से मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर। तो एक और बेहतरीन ओवर अगर नजर 9th ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ 4 रन बने और 3 रन बने इस ओवर में। एक और बेहतरीन ओवर, और इस बार इमरान ने एक बेहतरीन ओवर समाप्त कर चुके हैं, और 5 ओवर के बाद सिर्फ 17 रन जोड़ चुका है शाइन बंटवाल। रनों की इस वक्त सख्त तलाश में, अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में शाइन बंटवाल के बल्लेबाज अपने बचे हुए 7 विकेटों की मदद से और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तो दोनों टीमें शाइन बंटवाल और नजर 9th ब्लॉक एक बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए इस मेगा फाइनल, इस द्वितीय सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं, और यहाँ पर संघर्ष जारी है, और पलड़ा कुछ हद तक इस वक्त भारी लगता है नजर 9th ब्लॉक का। अंतिम ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर बटोरने होंगे शाइन बंटवाल के बल्लेबाजों को, यहाँ पर अगर उन्हें बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज की गेंद लेग स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर। पहला वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं उनके पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाज नजर 9th ब्लॉक है। तो ये बात ये दर्शाता है कि कितनी कसी हुई लेंथ और लाइन के साथ, एक्यूरेसी के साथ अब तक गेंदबाजी की है।
तो यहाँ पर गेंदबाज उसे गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं अपनी अगली गेंद। इस बार गेंद को ड्राइव किया, मिड ऑन पर रन से नहीं मिलेगा। गेंद को ड्राइव करना चाहते थे ऑफ साइड पर, लेकिन गेंद गई ऑन साइड पर, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, और रन से इस वक्त रख चुका है। कुल मिलाकर 18 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदें अब बाकी। जस्ट 5 बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, वाइड स्लॉन्ग ऑन की दिशा में, क्लीन कलेक्शन नहीं, थोड़ी सी मिसफील्ड, बल्लेबाज दूसरे तौर पर नजदीकी मामला, स्ट्राइकर रन पर थ्रो पहुंचा, लेकिन थ्रो काफी वाइड, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, पहला रन काफी तेजी के साथ पूर्ण किया, और जैसे ही देखा कि वाइड इज लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर है उनके हाथों से गेंद छूट चुकी है, दूसरे रन के लिए कदम बढ़ा है, और यशस्वीतम दूसरा रन यहां पर पूर्ण करते हुए इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार खूबसूरत, और गेंद सीधे सिली मिड ऑफ फील्डर के हाथों में। खूबसूरत स्ट्रोक जरूर था, लेकिन प्लेसमेंट गलत था, और गेंद सीधे पहुंची मिड ऑफ फील्डर के हाथों में, सिली मिड ऑफ फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है। 20 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका है, और ऐसा कहना पड़ेगा शाइन बंटवाल की पारी यहां पर लड़खड़ाती नजर आती हुई। सिर्फ अब गेंदें बाकी हैं, उनकी पारी में 3 और रन इस वक्त बन चुके हैं 20, और देखते हैं इन बचे हुए 3 गेंदों में अब शाइन बंटवाल के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तो एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट YFC ट्रॉफी 2023 2023 एडिशन 2 इस वक्त एक शानदार प्रगति करता हुआ, और यहां पर द्वितीय सेमीफाइनल मैच में इस वक्त मुकाबला जारी है दोनों टीमों के बीच में इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। और इस बीच बल्लेबाज आरिस इस वक्त बल्लेबाज स्ट्राइक लेते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, नॉट कॉन्फिडेंटली गेट, इस वक्त उछालना चाहते थे चूंकि थ्रो को रिसीव करने में असफल गेंदबाज, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। रन्स आर हार्ड टू कम बाय फॉर द बैट्समैन ऑफ शाइन बंटवाल, और यहाँ पर जहाँ तक बचे हुए गेंद का सवाल है तो सिर्फ 2 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी, और गेंदबाज उजैब गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर रन नहीं निकल रही थी। बेहतरीन गेंदबाजी, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। एंड द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। उनकी पारी की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज उजैब इस वक्त तैयार, तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद जाती हुई मिड विकेट की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के दौड़ पर नॉन स्ट्राइकर पर थ्रो पहुंचा, निशाना चूका, और आसान सा मौका यहां पर गेंदबाज गंवाते हुए, और फलस्वरूप बल्लेबाज उनके पारी के अंतिम गेंद पर 2 रन प्राप्त कर चुके हैं। So the innings is up. Their stipulated 6 overs are completed. They managed to score 23 runs on the board for losing 4 wickets for Shine Bantwal, and now they set a target of 24 for another 9th block in 6 overs to qualify for the grand finale of this competition. तो 24 रनों का लक्ष्य, ठीक 4 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट, और जहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का, तो सतीश निस्संदेह एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस came from the bowlers of another 9th block, and because of that they restricted the batsmen of Shine Bantwal for just 23 runs, 24 the target for them, exactly 4 runs the required run rate for them at the situation. और जहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का, तो एक सतर्क शुरुआत अगर उनके सलामी बल्लेबाज करते हैं तो शाइन नजर 9th ब्लॉक अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। और जहां तक है शाइन बंटवाल का सवाल है, हालांकि उनके बल्लेबाजों ने सिर्फ 23 रन बनाए, लेकिन इस वक्त मौका जरूर है उनके सामने बाउंस बैक करने का। उनके गेंदबाज राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर घातक गेंदबाजी करते हैं, तो निस्संदेह यहाँ पर दबाव नजर 9th ब्लॉक के ऊपर आ सकता है। लेकिन नजर 9th ब्लॉक के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर अगर दबाव डालना है तो यहाँ पर शाइन बंटवाल के गेंदबाजों को कुछ विशेष रणनीति, डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करनी होगी। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस द्वितीय सेमीफाइनल मैच का द्वितीय सत्र काफी रोचक होगा। इस उम्मीद अपेक्षा के साथ माइक्रोफोन पर अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Well, absolutely, Gopi. And just I want to see that, Gopi, the 23 runs which is scored, only 4 wickets fallen. And
It's unbelievable, isn't it? It doesn't look like it's going to be a. They lost the wicket. That's why their run rate is very slow. But it's not like that. We are seeing here is that discipline, the bowling discipline. What we are talking about. There is extras. There is not that much of extras. Only four extras out of that one wide or one wide, two leg byes. Of course, that leg byes, which is not a mistake of the bowler, and one bite. This is not also a mistake of the bowler. It's a wicket keeper's mistake. But just see the discipline. Only one wides. When you are conceding a little extras, then all the chances for you to restrict the opposition for the less score. This is, I think, is one of the greatest lesson for other players, other teams. So how important that you are to be disciplined in our bowling performance. And I think ninth blocks bowlers did a great job. Not only their captain won the toss, they elected to field first, and the bowlers of ninth block justified the captain's decision and bowled magnificently. Now Gopi just coming back to the team, team Shine Bantwal. How well they will go into shine here. It's a very difficult to shine here, but not impossible. Just like what the kind of bowling ninth block is dead, the same kind of bowling which is need to be repeated by the Shine Bantwal if they wanted to shine in this semi-final. Otherwise, it's going to be a ninth block. Definitely, they are in a driver's seat of winning this match. It's a very difficult. It's a very difficult winning the match, but difficult road always. Just I mentioning always difficult roads often leads to beautiful destination. And wait and see how the destination for ninth block. Of course, the destination is not a big destination, only 24. But for Shine Bantwal, it's a big destination. Restricting 24 runs in 6 overs is definitely is a big destination for them. And wait and see how well they will going to restrict the opposition. And some attacking bowling, which is very important. Therefore, attacking in the sense, Gopi, not only they need to restrict the runs, at the same time they need to pick the wickets. Once you started to pick the wickets, you can restrict the runs, and that might be the strategy from the fielding team to how to attack the opposition, how to get them very cheaply. Otherwise, Shine Bantwal definitely under pressure. The first ball, it starts by Naufal to the left-hand batsman Taslim. Taslim this time nothing much do with the delivery. Just I'm talking about the discipline, Gopi, and straight away the indisciplined bowling. And there is a little margin for error. You can't do the mistake when you are depending a total score of 23. You can't do this mistake bowling wide balls. This time Taslim lofted that one down to deep bucket square leg region. Will go into a chance here for the fielder. Oh, what a magnificent, absolutely fantastic piece of fielding there by the fielder. I don't think if they're going to win the match or not, but this man really won the heart of all cricket lovers here. What a glorious piece of fielding. All throughout the tournament, Gopi, he's been outstanding. Zahid is a man, he's been outstanding. Yesterday also I'm watching him. The fielding from deep long off to from a deep mid wicket is traveling. It's not so easy, Gopi. He's sprinting and is very athletic. Absolutely fantastic piece of fielding there by Zahid. And that's what really required when you're depending a small total. But Taslim has got a positive start. 2 on the board, 3 on the board. Outside the run of off time. That's the line you need to bowl. That's the line we need to bowl. When the batsman is so strong on the onside region, they need to see the which line to be better, which line to be the better, which line to be the weakness of the batter. And the bowler ball that's outside the run of off temp, and there is no chance at all for any run. Now fall again. Right arm round the wicket to Taslis. Taslis drives that one again down to mid off region. Again they're going for the single. Each and every run taking Shine Bantwal away from the match and bringing ninth block straight away into match. Already 4 on the board without loss of any wicket. The very good start there by these two opening batters, Taslil as well as Nihal. Nihal, everybody knows what innings is played for his team yesterday. Absolutely is won the heart of cricket lovers here in this particular cricket ground by his excellent piece of batting in the last 2 matches. This time it's going to be a chance. Oh my goodness, chance for the run out. The chance for run out. That's what Shine Bantwal wanted in the early stage of the innings. Taslil wanted a single. His partner is not interested. Just I want to see it in a replay. And ball is in the air. Looks like might be the ball is hitting the bat or pad. I don't know. But anyhow, the wickets are falling in the form of run out. The wicket keeper so quick in the negation behind the stump and completes the formalities of making a run out.
The first wicket is back into pavilion. Tasli is back, and Shine Bantwal. Can they make a comeback here? Picking a one wicket is not enough. Picking one wicket here not enough for Shine Bantwal to winning this match. But picking up wickets in a frequent intervals, picking up wickets in each and every over is so important for the team to win this match. The new batsman in Imran, one more very very experienced campaigner for the side, came into middle. One who can handle the pressure, one who loves the bat under pressure is in non-strikers and right arm over the wicket bounce. Nihal tries that and look at the quality of the stroke. Look at the quality of the stroke, but even the quality of the fielding is so good there from Shine Bantwal. Nevertheless, his equal battle is on. That's the kind of effort which is required from the uh, fielding department when you're depending a small total of 23 or 24 to win the match for the opposition. They needed that kind of support for the bowlers. Again, Naufal with the short run up away from us. Right come over the wicket, bowls down the leg stump. Going to be delivery which is called by umpire is a wide, and not that much of exercise for Iqbal in the first innings because only one wide which is given by the opposition. But this time already two wides in this over. It's going to be a little bit exercise here for umpire as a two wides in that over with that couple of runs scored Namuzan to 5 on the board, and another 19 more runs required for the victory for the ninth block to cross to get the place in the mega final of this prestigious YFC Trophy 2023. Right arm over the wicket, bounce this up, chip that one nicely over the top, up and over, one bounce over the rope for 4 runs. That was a magnificent struck there from Nihal. This is a Nihal for you. I just have mentioned about his ability, his potential. You can't give it for this man when you're bowling in the power play. Little margin for error. If you bowl that line, the batsmen were definitely going after you. And that was a really imperious lofted covered right there from Nihal. And that boundary, Gopi, takes team in the right position of getting a place in the mega final. एग्जैक्टली सतीश, पहले ओवर में 9 रन जोड़ना, 24 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 ओवर के फॉर्मेट में 9 रन अगर पहले ओवर के बाद आप बनाते हैं तो निस्संदेह बेहतरीन शुरुआत खेला गया। हालांकि उन्होंने एक विकेट जरूर खोया इस वक्त तस्लीर के रूप में, लेकिन 9 रन बनाने में सफल। अब 15 रन चाहिए 4 ओवर में। रिक्वायर्ड रन रेट स्ट्रेट अवे कमिंग डाउन टू 3.75 रन पर ओवर। और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है नजर 9th ब्लॉक के बल्लेबाजों को। और जहां तक सवाल है यहाँ पर शाइन बंटवाल का, तो अब ऐसा कहना पड़ेगा
Thank you very much. Welcome back. And during this break, two pitch reporters are came into pitch. Two goats came into pitch and examining the pitch report because how the 24 against him has got restricted against him for 23 runs. Then I will take the interview after that, after this match. But coming to this match, as the 9 runs which is scored, 9 which is scored in the first over, and the gate which is fully opened for now ninth block to grab the place in the mega final. But if they wanted to close the gate for if they wanted to close the gate, they need to hit the stumps, and here you go. The wicket number 2 is back into pavilion. Imran looks like he himself drags the ball into stumps, going for the expansive drive on the offside, and just look at that one. Angling round the wicket, batsman going for the drive, got the inside edge of the bat into the stumps. The wicket number 2 which is back into pavilion. It's 9 for the loss of 2 wicket. And now Gopi, looks like opportunity is there for them to bounce back here. If you have any international record, the India was defended a small total 104, which is defended against Pakistan 1984. So Sunil Gavaskar picked up for 5 wickets in a slip region, slip cordon. 125, I think so. Yes, and maybe that is international 50 overs format game Gopi. But this year is a 5-6 overs game. The possibility is still there. Anything can be happen in cricket, isn't it? And here is a new batsman. Is coming to the middle. Isham, one who did a great job, one who really responsible for the dismantling the batting department of their opposition, just came into bat. He's a fantastic all-rounder. Right arm round the wicket. Delivers outside and off time, well within the reach of the batter. Batter misjudging the ball. Nazim is not really given up yet. This is what you needed, isn't it? The body language is so important from the teams that never give up. Never give up is a slogan. Lovely shot, driven down to deep long on region. Oh, that's going to be a big bounce, but a fantastic piece of fielding there by the fielder. The batsman crossed over for a couple of runs. The shine Bantwal, definitely they're shining because of their fielding, and the captain himself this time almost saving the boundary for his team. It's not so easy because after ball is having the bounce in front of him. It just looks like it's very difficult for him to save that one. But look at the jump of that fielder, absolutely fantastic. It's all bodies in the air and saving a couple of runs for his team. But couple of runs is quite enough for team ninth block to get back at this game. It's 11 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress. So maybe now Shine Bantwal thinking about why not we are getting at least 30 plus runs. If we're able to get the 30 plus runs on the board, it's going to be a different ball game. But still they're fighting hard for the victory. Right arm over the wicket bounce. This time, lofted it. That will go into a 1 bounce. Again he saved. Absolutely fantastic. The captain, I think Sadiq is there in the mid-wicket region. And done a great job down in the mid-wicket region. Once again, the similar, identical mirror display of the previous save. Same thing is happened. This time more difficult than the previous one. This is the more difficult one than the previous, because this time he need to cover the ground a lot. And he got this time. Again, the placement is so good. Oh my goodness. Zahid this time. This is not his mistake. But it's a mistake of his feet. Because it's a mistake of his feet, because feet is really coming to that ball after he's saving that one and putting the ball himself into the boundary line for 4 runs, and that boundary will brought team ninth block straight away strongly back into this game. The 17 for the loss of 2 wicket, and Gopi, everything looks like going to be closed here. Because 24 target means another 7 runs required for the victory. They got 4 overs to go, and looks like they are in under pressure. And just we're talking about the miracle bowling which is required, just like I mentioned earlier, that India depended on 127 against Pakistan. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर मिरेकल बॉलिंग नहीं, दुगना घातक गेंदबाजी की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ 7 रन बनाने, 4 ओवर का खेल बाकी है, 1.75 रन प्रति ओवर। तो जहाँ तक इस वक्त सवाल है, नजर नाइन्थ ब्लॉक इस वक्त बुलंदियों पर नजर आता हुआ, ऐसा कहना पड़ेगा अपनी मंजिल की ओर
ಅಗ್ರಸರ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಟೋರ್ಪಿಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ विनती दयविಟ್ಟು. तो 7 रन 4 ओवर में और देखते हैं सतीश क्या होता है यहाँ पर. तीसरे ओवर की पहली गेंद रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया, रन नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है. कुल मिलाकर 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर. फिर से एक बार गेंदबाज की ओर किया गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त ऑन साइड पर, बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद डॉट गेंद, रन से नहीं मिलेंगे. 2 डॉट गेंदें जरूर गेंदबाज फेंक चुके हैं लेकिन बल्लेबाजों पर कुछ खास दबाव नहीं इस वक्त. दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. 3 डॉट गेंदें, 3 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स फॉर द राइट हैंडेड बैट्समैन. और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन से यहाँ पर नहीं मिलेंगे. तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर. द स्कोर वो स्टेज 17. इस बार दिस टाइम इज गॉट दैट वन फॉर अ मैक्सिमम, इट्स अ ह्यूज वन. And that 6 brings the equality. Scores are now leveled. Just a single run now they have to score for victory. And now it's just a formalities remaining in this match. Absolutely perfect stroke came from the bat of Nihal. और बल्लेबाज के पास वक्त था कि गेंद की टर्न को, गेंद की उछाल को पहचान कर स्ट्रोक खेले और खेल भी दिया. छक्का उनके पक्ष में. अगली गेंद इस बार उछालना चाहा चूके और गेंद पहुंची इस वक्त शॉट फाइन लेग की दिशा में और यहाँ पर रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी इस वक्त बाकी रह गई है इस मैच में. और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सलाम, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप पर, गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ. और इसी के साथ नजर 9th ब्लॉक आर थ्रू टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, डिफीटिंग शाइन बंटवाल handsomely by 8 wickets with more than 2 overs to spare, and with that victory they are through to the mega final of this competition. तो अब इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में उनका मुकाबला होगा टोर्पिडोस खाना के साथ और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि इस श्रृंखला का ग्रैंड फिनाले वाईएफसी ट्रॉफी 2023 सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले एक रोचक होगा यहाँ पर टोर्पिडोस खाना और नजर 9th ब्लॉक के दरमियान. सो मैन ऑफ द मैच तो बेहतरीन इस वक्त मैच समाप्त हो चुका है और जहां तक का सवाल है लगभग एक तरफा मैच था और बेहतरीन मैच रहा इस वक्त नजर 9th ब्लॉक के लिए और वो इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुका है. तो देखते हैं, एक मैच सिर्फ बाकी है. इस वाईएफसी ट्रॉफी 2023 का चैंपियन ट्रॉफी का हकदार कौन होगा, ये इसका जवाब हमें मिलेगा एक या 1.5 घंटे में यहाँ पर और मेगा फाइनल मैच शुरू होगा चंद मिनटों बाद यहाँ पर. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब इस श्रृंखला का मेगा फाइनल मैच यहाँ पर शुरू होगा. धन्यवाद, थैंक यू. So man of the match of this match, the award goes to the bowler who took a broken hat-trick in this match. 3 wickets he took in his 1 over and scored 8 runs unbeaten in just 5 deliveries, and because of this all-rounding performance he bagged the man of the match award. I request Isham of Nazar 9th block. Isham of Nazar 9th block, please come on to the right and receive the man of the match prize from manager of YFC, Mr. Naushad will hand over the man of the match prize for Isham for his brilliant all-rounding performance in this semi-final match. So the final match is now going to begin with just a short while and we'll be back right after the short break. Thank you. Dhanyavad. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಸಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು.
ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಉಪನಾಯಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಶಾಸಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವಾ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜೆ ಆರ್ ಲೋಬೋ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಮಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಂಟಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. 5 ನಿಮಿಷದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಬುಲ್ಕಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಪನಾಮಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಲಾಯಿ ಸಂಯೋಜಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಜ್ ಸದಸ್ಯರು ಪುತ್ತೂರು ಪುರಸಭೆ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಬೆಲಿಪಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಸುಳ್ಯ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ವಿಭಾಗ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಕಂಬ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಯಶೀಲ ಅಡಂತ್ಯಾಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಆರ್ ಡಿಸೋಜಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸಿ ವಿನಯರಾಜ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆಇ ಅಶ್ರಫ್ ಬಜಾಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಾಲ ಸಂಯೋಜಕರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೆರಿಲ್ ರೇಗೋ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆಶಿತ್ ಜಿ ಪಿರೇರಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಲುಕ್ಮಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪಿಯೂಸ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಸಂಯೋಜಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಇಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ YFC ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಮಹನೀಯರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್: ನೂರುದ್ದೀನ್ ಜುಬೇಲ್, ಆರಿಸ್, ಸಮೀರ್ ದುಬೈ, ಕುರೇಶ್ ದುಬೈ, ಆರಿಫ್ ಬೆಹ್ರಿನ್, ಮನ್ಸೂರ್ ಜುಬೇಲ್, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜುಬೇಲ್, ಖಾದರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಜುಬೇಲ್, ನವಾಜ್ ಸೌದಿ, ಆರಿಸ್ YFC ಜುಬೇಲ್, ನೌಷದ್ YFC ಜುಬೇಲ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ನಜೀರ್ ಬಜಾಲ್, ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ, MK ಶೌಕತ್ ಬಜಾಲ್, ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವಾ, ಎಕ್ರಿತ್ ಅಶ್ರಫ್ ಬಜಾಲ್, ನವಾಜ್ ಆಲಿ ಫ್ರೈಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್, ಜಸ್ಬೀರುದ್ದೀನ್, ಶಾಬಿ ಖಾನ್, HS ಹರೀಫ್, BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಜೇರ್ ಲೋಬೋ ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನವನ್ನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ನಜರ್ 9th block, please report to the commentary box immediately for the tossing ceremony. We'll take a short break here, and after that short break and myself and Gopi will go to continue here. Thank you. Thanks a lot.
I request captain of ninth block as well as captain of Torpedoes Khana. Please report here immediately for the toss. ನಜರ್ ನೈನ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ತಮಗಾಗಿ ಟರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇವರು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರಾದಂಥ ಜಬ್ಬರ್ ಇವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಜಬ್ಬರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪಿಚ್ನ ಕಡೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪಿಚ್ನ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಿಚ್ನ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂತಹ ನಾಸೀರ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಗೋಪಿ ಇವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಕೂಡ ತಾವುಗಳ ಈ ಒಂದು ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
Welcome back once again for the mega final of this prestigious YFC Trophy 2023, and which is proudly organized by YFC Bajal Nanthoor Mangalore in association with the Little Kingdom Funds Bahrain, and owner is Arif Bajal. Welcome back once again for the mega final of this prestigious cricket tournament. YFC Bajal Nanthoor presenting the prestigious YFC Trophy 2023 Season 2, as everything is ready for here for the mega final. The first team which is came into the final, Torpedoes Khana from the Mangalore pool, and in Sunday they are defeating some biggest opponents, and their first time in the season 2022 and 23. Torpedoes Khana qualified for the finals, and on behalf of local fools, at last absolutely one of the fantastic journey for
Nazar ninth block, and they came into the final after winning the toss. Mega final toss, which is on by the captain of Nazar ninth block, and they rightly elected to field first, and they are going to ball the first over. The opening batters for team Torpedoes Khana, the successful opening pair, Ashraf as well as Manjunath, the opening batters are in the middle. 7 overs game, 2 overs going to be a power play, and here is the first ball. And nicely turns that one down to square leg region for a fine leg region for a single. First run of the final. First run of the mega final of this YFC Trophy 2023. Ashraf has got a single here, and his team also started their journey. One without loss of any wicket in the over number first in progress. The man who got a hat-trick in the previous match semi-final, and he got a man of the match, Isham, will going to ball the second delivery of the first over of the power play. Backward point, short cover point, short extra cover, short mid off, long off, short mid on square leg, and long off this time. Oh my goodness! So looks like once again Samanjanath will nearly not having a good time in this particular tournament after getting a 2 ducks in the form of run out. Then at last he managed to bounce back in the semi-final, but here also looks like he's going to be out for duck. But fortunately for him, Sadaqatullah couldn't manage to hold the catch. Of course, he tried his level best to running to jumping and try to take the catch, but ball just slipping out of the hands. He won his partner, the fielder, couldn't manage to reach the catch, and Manjunath has got a single, 2 without loss of any wicket in the over number first in progress. Isamna balls right arm round the wicket, right arm over the wicket, ball going down the leg stump, too far outside the non-leg stump. White call by umpire. In the previous match, Nazar ninth block won the match because of the effort of the bowlers, because they bowled very well, not really conceded many extras, only one wide conceded in the previous match, and they need to continue this one against a big team like Torpedoes Khana. And very interesting to see that two neighboring teams, they're clashing in the Vega final of this prestigious trophy, YFC Trophy 2022, and we're expecting the great battle, healthy battle between these two very good teams. Again, Isam, right arm over the wicket to Asif. Asif just dives that one down to deep long of region. Sadaqatullah tried his level best to stop that one, and most of the times the ball is running towards Sadaqatullah, and there is no there is a possibility of a single there because of that misfield. Again, right arm over the wicket, balls, drives that one right in the vacant area, down to deep long on region, and ample time for the batter to complete the single. So with that single, scoreboard numbers on to 5 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress, as Isham bowling with the short run up. He got 5 fielders in the offside, 4 in the on, short of square leg in front of square mid wicket, and there is a deep wideish long on. This time going for the drive, missing it completely. Fantastic piece of bowling from Isham. It continues in this mega final as well. Needed that kind of line and length, strong line and length there from Isham. That's what I'm already mentioning about the consistency is the key for the success of Isham in this tournament. Right arm over the wicket, bounce this time, tries that one, try to beat the infield, chance of run out, and it's going to be a chance for the third umpire. Isham looks so confident. All of the fielders of team ninth blocker looks like they are very confident, but need to see the confidence of the third umpire. Will it going to be out? Will it going to be a not out? If it is out, it's going to be a big breakthrough here for Nazar ninth block. Excellent piece of fielding there by the short mid wicket. Quickly returns the ball to the hands of Isham, and Isham also done a very good work, quick work to uproot the bills, but we need to see when the bills are uprooted whether the batsman is safe or not. I think batsman is not safe. He's gone. Ashraf is gone. Out pieces the call came from a third umpire. The first wicket is back into pavilion. Excellent piece of fielding there by Imran, I think so, down at a short mid wicket region. Picks the ball, returns the ball, and Isham has done a great job. Absolutely total teamwork, costing a huge wicket of Ashraf. Absolutely huge wicket, because Ashraf is a kind of batsman. He got a lot of runs in the from the bat for his team, and unfortunately is back into pavilion now. So now Imtiaz coming to the middle. Some the friendly movements out there for Imtiaz with the Sadaqatullah. Of course, in cricket, of course, we are
opposition only in cricket, but mentally everyone is friends. They are each other, they friends each other, and of course that's what really the good sportsman spirit shown there by both the players. Two very good players, of course. Sadakatullah, one of the most experienced campaigner, but unfortunately, of course, he's played for Torpedoes Corner for a long time, for long years, but is now playing against Torpedoes Khana and Imtiaz, now the captain of the side, is came into middle, and wait and see how well Imtiaz will going to contribute from the bat. After losing the wicket of Ashraf, of course Imtiaz needed to get some runs for his team. So good over there from Isham. The first over which is completed after first completion of first over. Searching for the right track, and Torpedoes Khana has got only 5 on the board for the loss of 1 wicket. Bowler Sahil brought into attack. Right, over the wicket, balls again, nicely turns, and also Scarlet region, chance of run out, a wide throw coming from the fielder. Otherwise, it's going to be a disaster for Manjunath. Once again, Manjunath, something there is a relation with the run out and for Manjunath, especially in this tournament. After getting 2 times in the form of run out, is out for duck in 2 innings, the beginning 2 innings. Then here also he's been lucky. Once it's caught, missed out by the fielder. Again, it's a chance of run out. Maybe the day which is belongs to Manjunath if able to talk with the bat. And 6 for the loss of 1 wicket. Over number second is in progress. Sahil back into his bowling mark. Pass umpire Nasir Bajal. Right above the wicket. Bowler's back drive. Powerfully driven down to deep long off region for an easy single. Isham, the fielder, there in the deep. Will going to collect that one, but meantime batsman has got ample time to collect the single. With that single, scoreboard moves on to 7 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. One of the star bowler for the side of team Nazar 9th block, Sahil, has got a very good tournament from the ball. Right arm over the wicket, balls to Imtiaz, swings that one. They're appealing, but umpire is not really moving here. Looks like it's going to be excitement. The excitement is still there in the fielders. They're saying that they got the wicket, but umpire has to be enough evidence to get the wicket here. But looks like it's going to be a conversation going between 2 umpires, whether the bat involved or just the pad involved. Now they're asking for the third umpire, and of course, asking for the third umpire is always going to be a trouble for the third umpire, because run out and stump out is okay, but the bat involving the bat ball is always going to be a difficult one. But still, our technician, King Sports technician, just wait and see how we will going to get the best result of this decision. And while trying to hit the ball, maybe just want to see whether it's excitement or a bat involved. We need to see. It's out. After ball hitting the pad, hitting the board, after hitting the bat, ball hitting the pad, and ball is ballooning in the big round of applause which is required for the technicians of King Sports. So big hand for King Sports, because absolutely fantastic work. It's not so easy.
This is not so easy, Gopi, because we are seeing one international cricket that kind of technology is advanced technology, but in a limited technology, I think the King Sports technicians has given a fantastic job here because it's a so difficult job, Gopi. But once again, this tournament is proving that it's neither. Nevertheless, it's almost looks like it's going to be a standard of international cricket tournament. And again, fantastic piece of work there by the and Naufal, the owner of King Sports, I think has done a great job because it's not so easy to get the best result of this match and this best result of the addition because always it's a difficult one, isn't it, Gopi? When bat involving, then ball hitting the boot, and even that very close to the ground and boot level. But after that, getting the very close picture of that, they got a very good result. I think the King Sports done a great job in this particular tournament and throughout the tournament. एग्जैक्टली सतीश, एग्जैक्टली सतीश, और किंग स्पोर्ट्स ने एक बेहतरीन काम किया है और यहाँ पर इतना आसान नहीं है इतना क्लोज व्यू लेना और यहाँ पर देखिए किस तरीके से इम्तियाज का विकेट गिरा था और इसे क्लोज एंगल पर इस वक्त शूट करने के बाद एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट उन्होंने दी कि असल तौर पर क्या हुआ था वहाँ पर और आखिरकार हम किंग स्पोर्ट्स का सारे सर्व क्रीड़ा प्रेमियों के ओर से उनका अभिवादन करते इतनी बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट के लिए। तो यहाँ पर इम्तियाज का विकेट गिर चुका है और ये विकेट निस्संदेह इस वक्त टॉर्पेडोज खाना को ड्रॉबैक टॉर्पेडोज खाना के लिए ड्रॉबैक यहाँ पर साबित हो सकता है। Absolutely, the wicket of Imtiaz is definitely going to be a drawback. But certainly it looks like a level of confidence from the wicketkeeper and the bowler after that ball is ballooning up in the air. Everybody knows that they got the wicket. That's why umpire is asking for the third umpire. Even began for the two field umpires because they are referring for the third umpire. And this time, lovely shot, beautifully driven down to deep backward square, but unfortunately we're going to get a single for that. Always going to be the frustration for the batter when you are hitting the ball quite nicely down to deep backward square like this. It looks like you will going to get the maximum. But unfortunately, the ball is traveling a little bit squarer, a little bit finer, and fine in the sense they will going to get a single for that lovely looking slog sweep shot. And batter is off the mark. The intention is very clear there from Sinan that after losing a wicket of Imtiaz, he will going to take the initiative of getting acceleration of the run rate. So far, the runs are not coming very freely for the batters of Torpedoes Khana, but here is. Sinan is the batter, try to get some good score for his team and scoreboard is 8 on the board for the loss of two valuable wickets are back into pavilion, the wicket of Ashraf as well as wicket of captain Imtiaz. Sahil, the captain picking up the wicket of their opposition captain. Being the captain of the side, Sahil done a great job. Always the captain is one of the key role model for their players, other players. If a captain performs, and automatically the other players will going to follow the captain. Captain leading from the front. So far did a great job. Sahil, right arm over the wicket bounce. This time batsman drives that one down to mid wicket region, but protection has been given in the deep and neat collection. Looks like he's a little bit struggling, but he managed to get the ball to his hand easily and a cross for a couple of cross off for a single run. With that single score number on to 9 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. After that, winning the toss, selected to field first. Everything is going in favor of fielding team Nazar ninth block because in the power play, restricting the formidable batting department of Torpedoes Khana, it's not so easy. But so far, they've done a great job. Here is a Sahil bowling with a short run up. Right arm over the wicket, balls to Manjunath. Manjunath went for the sweep shot. This time umpire says it's not a wide ball, it's well within the reach of the batsman. Just a change up pace, slower one there from Sahil. Good over completed, excellent over there from captain of the side. 2 overs completed after completion of over number 2. It's 9 for the loss of 2 wicket and Gopi just 4 runs coming from that over, 5 from the first over, and more than anything else, 2 valuable wickets are back into pavilion. The wicket of Imtiaz as well as the wicket of Ashraf. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಆತ್ಮೀಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂಥ
ಜನಾಬ್ ಅಶ್ರಫ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ರಫೀಕ್ ಟಿಂಬರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ two very the dignitaries for this cricket tournament, and I would like to invite them for the stage, and please come and watch the final match in our main stage. निसंदेह सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त द फर्स्ट 2 ओवर्स बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ नजर 9th ब्लॉक और 2 विकेटें वो प्राप्त कर चुके पहले 2 ओवर में और खासकर रन इस वक्त है 9 रन. जहां तक सवाल है सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप तौर पर उसकाना का है और उस सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर ऐसा कहना पड़ेगा पावर प्ले में पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त कर चुके गेंदबाज. Absolutely, they controlled very well the first power play. This time, oh my goodness, little bit of absence of mind there from the wicketkeeper behind the stump. Muba just thought that the batsman is not going for the run, but it's too late for him, seeing that the batsman is struggling in the non-strikers end. It's too late, and otherwise the opportunity of run out which is created for the wicket keeper. Here is again Isam, right arm over the wicket across the line of the delivery, is trying to swing that one, magnificent piece of wicket keeping there from Muba. Muba been outstanding. Just I'm talking about some 2 to 3 wicket keepers done a great job in this particular tournament, and he's the one. Muba is the one. He's done a great job behind the stump. Just in a fraction of second, it's been outstanding collection behind the wicket, and there's no chance at all for any run. Of course, the wicketkeeper is a key man, and any success of the bowler is depending upon the wicketkeeper. If the wicketkeeper collects the ball neatly, that will going to lift the spirit of the bowlers, and that's why it's always you need to have one good, very good wicketkeeper in your team, so that you will going to galvanize the level of confidence of their teammates. Again, is some bowling with a short run up, right arm over the wicket. To Mangalore. Oh, what a shot! That was a bulleting fire towards the fence. Outstanding, just like a stroke from the cannon. Oh, ho, ho. What a shot, Gopi! Absolutely terrific. Absolutely terrific. It's an outstanding cricketing stroke, Gopi. It was a cricketing stroke of the tournament. It's not a stroke of the day. It's a stroke of the tournament, isn't it? एग्जैक्टली सतीश, फ्लैटर वर्जन पर इस गेंद को उछाला गया था और मंजुनाथ आमतौर पर ऐसे स्ट्रोक खेलने में माहिर है. यहाँ पर थोड़े से सफल होते हुए ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट पिक दैट वन राइट फ्रॉम द स्पॉट एंड लफ्ट दैट वन फ्लैटर इन अ फ्लैटर वर्जन डाउन टू अ डीप मिड विकेट. हालांकि फील्डर मौजूद है वहां पर, ऊपर की ओर छलांग जरूर लगाए, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर और गेंद सीधे फ्लैटर वर्जन के जरिए सीधे जा गिरे डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक मंजुनाथ के बल्ले से लग चुका है. Absolutely, Gopi. It was looks like the stroke which is definitely stroke from the cannon. What a fantastic timing of that stroke, isn't it? Just like that trace a bullet. What a fantastic stroke there from. Just look at it on replay. I want to see it in replay. The bat speed. Look at the bat speed of Manjunath. This is not the 6, and that was the same line, same length. Manjunath picked that stroke. Again, try to repeat that one. Isam is so good comeback from the bowler's point of view after seeing the Manjunath is playing that stroke very well, so that he bowled outside the line of off stump. Good comeback here by Isham, but still Isam is not really believes his eyes how that Manjunath picked that ball, because ball is on the middle stump, isn't it? Nothing wrong with the line of the delivery, but he picked that one right from the middle of the bat, and just a fraction of a second that ball went towards the deep backward square leg for a 6. Just like Gopi is mentioning about the fielder is there in the deep backward square leg, tried his level well, but the ball is went over that fielder. This time in other way. Now even the leaves of the trees are falling, because that shows the power of this man. What a powerful striker of the ball, unbelievable, isn't it? Just a single for that, but I think even that single, but every crowds, the spectators really enjoying that stroke making of this man. Powerful striker of the ball, and after completion of over number 2 and 3, it's a 17 for the loss of 2 wicket. I think Gopi, it's a comeback over, and definitely it's a comeback over for Torpedoes Khana, and especially the Manjunath, after getting a life in the first over, getting a life in the second over in the form of run out, then he capitalizing that life. That means it was going to be a danger sign for the opposition.
एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर मंजुनाथ का जो स्ट्रोक लगा था छक्के के तौर पर, तो उसकी बदौलत इस ओवर में कुछ हद तक वापस आ चुका है टोरपेडोस्काना। 8 रन इस ओवर में बने, पहला बेहतर ओवर टोरपेडोस्काना की पारी में समाप्त हो चुका है और इसी रफ्तार के साथ बचे हुए 4 ओवर में वो 8 के औसत से रन बनाते तो उनके टीम का आंकड़ा 40 को पार कर जाएगा, लगभग 45 के निकट पहुंच सकता है और 45 के आसपास का आंकड़ा चुनौती भरा यहाँ पर साबित हो सकता है नजर 9th ब्लॉक के बल्लेबाजों को, जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे और जब अगर टोरपेडोस्काना के गेंदबाज पहले ही ओवर से गेंदबाजी करते तो मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो सकती है नजर 9th ब्लॉक के बल्लेबाजों को। ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಗೋಪಿ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವಂತಹ ನಜೀರ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಜೀರ್ ಬಜಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಗೇಮ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ competition is going between these two very good teams. Teams which is from the neighboring, and there's two neighbor teams are clashing for the title of YFC Trophy 2023 between Nazar 9th Block versus Torpedoescana. Right arm. This time swings is that, but just a single. This is one of the disappointment thing to watch in this particular cricket ground. You can't get many runs behind the wicket. You can't get the many runs behind the wicket if you put any big shots behind the wicket. Then it's going to be a very difficult to get the big stroke. ಈಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ MK ಶೌಕತ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ವಾಟ್ ಅ ಶಾಟ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ Sinan there. He's been outstanding in this particular shot. I'm watching him and throughout the tournament. Whenever he played a shot, he plays it quite nicely. And one of the best stroke I watched him is that slog sweep shot. The 3 stroke is played behind the wicket, outstanding. And here is Imran again, right arm down the wicket. Again repeats that one. So 3 consecutive strokes came in the same direction. Can you believe this? Now the organizer really has a headache. Already 3 balls went. And maybe now they are going to give the penalty for the bowler. They will going to deduct the cash prize from the total cash prize. How many balls which is went totally? The 3 or 4, then 400 or 500 will be deducted from the cash. And here is again bowler bowling. Imran bowling that same line and batsman hitting that same direction. Again going to be a chance of one more, but this time ball is just well within the reach of the batsman. Batsman just missing the ball completely from the bat, and there's no chance at all for any run. So again Imran, right arm round the wicket. Balls to Sinan. Oh, lovely shot. Reverse sweep comes into play. This time they're definitely going to get a couple of runs. Excellent piece of batting display here from Sinan. Even though he's not getting boundary, even though he's not getting a 6, but he's really enjoying his batting in this particular over. 4 difficult shot. One is unorthodox reverse stroke. All are quality cricketing stroke there from Sinan's bat. Imran, right arm round the wicket, balls. This time crashing that one down to deep long off region for a easy single. So with that single, scoreboard numbers on to 24 for the loss of 2 wicket. 4 overs completed, and still Torpedoescana searching for the right track. It's a 24 for the loss of 2 wicket, and 3 overs remaining. Gopi, 24. The run rate is exactly the 6 runs per over, but quite unfortunate in the previous over. 4 very good cricketing stroke, but unfortunately the batsman Sinan has got a one single for that. That's why this over is not really become expensive. Just the 6 runs which just came from that over. Altogether, Gopi, Torpedoescana might be now looking for some acceleration because the 3 overs remaining, and at least they have to get 20 to 25 runs. Is going to be a winning total in this condition against 9th block, Nazar 9th block. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया 2 ओवर अंतिम बेहतर रहा। 2 ओवर में स्कोर था 9 रन, 3 ओवर में स्कोर था 17, अब 24 रन बन चुके हैं। अंतिम 2 ओवर में 15 रन जोड़ चुका है यहाँ पर
टॉर्पेडोज खाना। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर का खेल बाकी है और जैसा कि हमने पहले भी फरमाया था कम से कम 45 तक अगर पहुंचता है टॉर्पेडोज खाना तो निस्संदेह कि चुनौती भरा स्कोर यहां पर कहलाएगा। इन हालातों में अगर उनके गेंदबाज पहले ओवर से एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं तो इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए गेंदबाज साहिल और सामना इस वक्त करते हुए सिनान और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार साहिल। 5वां ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ पहली गेंद। इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड एट द लास्ट मोमेंट और गेंद पहुंचे मिड ऑफ की दिशा में और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 26 रन बच चुके हैं, माफ कीजिए 25 रन बच चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर और कुल मिलाकर उनकी पारी का 5वां ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक बार फिर से मंजुनाथ इस वक्त एक आक्रामक रवैया अपनाते हुए इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर मंजुनाथ को सफल होते हुए देखते हुए लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर इस वक्त फेंकी थी लेकिन यहाँ पर वाइड का इशारा अंपायर का। हालांकि गेंद काफी बाहर की ओर निकल रही थी लेग स्टंप से बाहर और 2 रन उनके खाते में जुड़ेंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। रन अब खुलकर बनते हुए यहाँ पर टॉर्पेडोज खाना के लिए और एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ इस वक्त टॉर्पेडोज खाना। दाहिना तो बढ़ता विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद और गेंद पर रन लेना चाहा लेकिन रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन पूरा कर चुके हैं, 28 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। साहिल इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों बढ़ता विकेट, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंजुनाथ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला टॉप एज पर, गेंद टकराई लेकिन 2 स्क्वायर इट वेंट और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। रन सब खुलकर बनते हुए यहाँ पर टॉर्पेडोज खाना के लिए और इस बीच गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को साइड पर स्विंग करना चाहा चूंकि ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद इस वक्त जा चुकी है। दिशाहीन गेंद, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर अपनी सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए गेंदबाज साहिल इस ओवर में लगभग 2 वाइड अब तक फेंक चुके हैं और इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार सिनान। दाहिना हाथ के बल्लेबाज इस वक्त साहिल की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार तो अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त सिनान तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सिनान के लिए ये गेंद इस बार ऑफ द टोस, गेंद को खेल दिया वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन का इजाफा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। तेजी के साथ गेंद पर झपके फील्डर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं। 31 रन, इट्स 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಶ್ರೀ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ for this wonderful cricket tournament YFC Trophy 2023, which is proudly organized by YFC Bajal Nanthoor and on behalf of all cricket lovers and on behalf of organizers, warm welcome sir for this wonderful cricket tournament. धन्यवाद। और यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त 32 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। साहिल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए मंजुनाथ के लिए गेंद को साइड पर उछाला खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर गेंद को लपक लिया गया है। यहाँ पर गेंद को उछाला था जरूर खूबसूरती के साथ लेकिन अगेंस्ट द विंड यहाँ पर गेंद को खेला था हवे के रुख के खिलाफ और गेंद अपने रफ्तार को होते हुए डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई और इसी के साथ तीसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका। 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और मंजुनाथ की एक बेहतर पारी पर यहाँ पर पर्दा गिर चुका है। 12 रन मंजुनाथ ने बनाए 1 छक्के की मदद से और आखिरकार अपना आउट होने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए और तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है टॉर्पेडोज खाना का। लेकिन अच्छा खासा स्कोर यहां पर स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता वह 32 रन बन चुके हैं। 5वां ओवर उनकी पारी का प्रगति पर एक बेहतर पारी सतीश मंजुनाथ ने खेली यहां पर और यहां पर उनका विकेट गिरने के बावजूद इस वक्त एक बेहतर स्थिति में टॉर्पेडोज खाना नजर आता हुआ और बचे हुए कुल मिलाकर अब कितने गेंदें बाकी है इस ओवर में? ओवर हो चुका है यानी
5 ओवर हो चुके हैं, 5 ओवर 12 गेंदों में कम से कम 15 से 20 रन भी बटोरते हैं तो एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा कर सकता है टॉर्पेडोज खाना. Exactly, Gopi, and they got a very good total because of the 1-6 which is came from the bat of Manjunath. I think is they really changing the complexion of a match a little bit. And you're right, Gopi. In the 2 hours remaining, 12 balls remaining, excluding wides and no balls. And in that 12 balls, just like we are mentioning about the 15 to 20 runs, definitely going to be a good score for Torpedoes Corner because they got a very good bowling department. But at the same time, Gopi, if a ninth block, if they wanted to win the match, if they wanted to become the champion of this prestigious YFC trophy, they need to restrict the batsmen of Torpedoes Corner in the last 2 hours. At least the 8 to 10 runs they need to restrict. Then only they got opportunity to winning this big title YFC trophy 2023. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया नया ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ हुजैब इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहा, बेहतर गेंद थी, कुछ हद तक अंदर की ओर आती हुई और गेंद लगभग बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद इससे पहले की गेंद फील्ड शॉर्ट स्कोर लेग पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. इट्स 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर इन फैक्ट. और फिर से एक बार उजैब इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइक इस वक्त है बासित के पास और नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त मैदान पर उतर चुके हैं मंजुनाथ का विकेट के पतन के बाद और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार उजैब की गेंदों का. उजैब दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद बासित के लिए ड्राइव किया इस वक्त लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, फॉलो थ्रू में तेजी के साथ गेंद पर झपके, स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं था और गेंद को बेहतर तरीके से फॉलो थ्रू में अपने दाईं ओर जाते हुए फील्ड कर लिया. गेंदबाज में रन बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 33 रनों पर. स्कोर बोस्ट है 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस. और उजैब अपने टीम के अन्य खिलाड़ी से कुछ सलाह लेने के बाद इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ और एक बार फिर से उजैब दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतर गेंदबाजी, लगभग जमीन के सहारे गेंद इस वक्त आए थे, गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहते थे, थोड़े से स्टंप्स को कवर करने के बाद बासित चूके, विकेट कीपर भी चूके और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. YFC ट्रॉफी 2023 एडिशन 2 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत, इस ग्रैंड फिनाले के अंतर्गत इस श्रृंखला का ग्रैंड फिनाले यहाँ पर खेला जाता है जबकि पहली पारी यहाँ पर प्रगति पर दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर. रन अब आसानी के साथ बनते हुए टॉर्पेडोज खाना के लिए उजैब एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, लेग स्टंप अपील को इस वक्त नकार दिया. ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं. विकेटों पर निशाना दागा था, उनका निशाना चूका, लेग बाई के रूप में 2 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं और रन्स कैसे भी बने लेकिन इस वक्त रन्स बनने जरूरी है टॉर्पेडोज खाना को और यहाँ पर लेग बाई के रूप में 2 रन पूरा कर चुके हैं बल्लेबाज और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 37 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. इट्स 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 in progress. Good going on here for Torpedoes Khan after being losing the toss and put it to bat by Nazar 9th block in the grand finale of YFC Trophy 2023 edition 2 which proudly organized by YFC Bajal Nanthoor Mangalore in association with Little Kingdom Phones Bahrain and they are going along nicely. और जहां तक सवाल है इस वक्त बातचीत जारी खिलाड़ियों के बीच में और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है. फिर से एक बार फील्डर अपने स्थान पर लौटते हुए और गेंदबाज उजैब इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार तो अपनी अगली गेंद लेकर उजैब इस बार अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आती गेंद को विकेट कीपर छोड़ चुके हैं, सिर्फ बाई का इशारा अंपायर का और बाई के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. दर्शकों से मैदान लगभग भर चुका है इस वक्त और जहां तक सवाल है मैच का तो
इस वक्त मेगा फाइनल मैच इसी श्रृंखला का यहाँ पर खेला जाता हुआ और अपनी अगली गेंद लेकर उसे इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बसीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेट लाइन और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। तो ओवर नंबर 6 की समाप्ति हो चुकी है, रन से बन चुके हैं 38। तो एक बेहतर ओवर रहा सतीश जिसमें सिर्फ 5 रन उजैम ने प्रदान किए और 6 ओवर के बाद 38 रन यहाँ पर जोड़ चुका है टॉर्पेडोज काना और अंतिम ओवर का खेल बाकी। और अंतिम ओवर में कम से कम अगर बेहतर स्कोर एक खड़ा करना है तो कम से कम यहाँ पर 10 से 12 रन कम से कम बटोरने होंगे टॉर्पेडोज काना के बल्लेबाजों को। अगर उनका आंकड़ा 45 के पार कर जाता है, 50 के आसपास पहुंचता है, तो निस्संदेह अंडर दिस कंडीशन इन हालातों में ये एक चुनौती भरा स्कोर कहलाएगा यहाँ पर। Exactly, Gopi. And so far, it's outstanding bowling performance because ninth block, the captain won the toss, selected to field first, just like what they did in the previous match in the semi-final. The same performance continues by the bowlers of. And just talking about the previous over, the ball by Uzaib, absolutely fantastic over, Gopi, because the one big shout for leg before wicket and the very good deliveries he bowled in that over. The wicket keeper behind the stump misses the ball. Altogether, the extras which is considered not from the bat, keeping the two quality batsmen quiet in this particular over. I think the Uzaib is doing a great job in this particular over. Altogether, Gopi, ninth block looks like they're giving a lot of competition for the Torpedoes Khana top team. And of course, but job which is not yet over, Gopi. Job which is not yet over because one more over is remaining. And the ninth block, if they wanted to dream about winning this title, they need to bowl one more good over, and then only they got opportunity to win the match because they're playing against one of the top Torpedoes Khana. बिल्कुल सतीश, इस वक्त नजर नाइन्थ ब्लॉक मैच खेलते हुए बेहतरीन टीमों में से एक जाने वाली टीम टॉर्पेडोज खाना के खिलाफ जाने वाली टीम टॉर्पेडोज खाना के खिलाफ। और यहाँ पर गेंद पहली गेंद थी इस वक्त, गेंद कुछ लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। शाम का वक्त कुल मिलाकर इस वक्त अंपायर वेदर इट्स अ सिंगल, ओनली अ वाइड, सो सिंगल रन, 39 द स्कोर नाउ। और शाम का वक्त लगभग 5:18 यहाँ पर बच चुके हैं। धूप का प्रकोप हालांकि काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद है। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद पैरों पर टकराई, प्लम इन फ्रंट, और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। सिनान की पाली समाप्त, शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता, गेंद अंतिम क्षण में कुछ ज्यादा उछाल लेते उनके फ्रंट लेग पर टकराए और अंपायर इकबाल को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से हुआ था देखिए। और गेंदबाज के इस अपील को पुरस्कृत करते हुए अंपायर ने अपनी उंगली यहां पर उठा दी। तो चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है। स्कोर है इस वक्त 39 रन, इट्स 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। सिर्फ एक गेंद इस वक्त फेंकी जा चुकी है, 5 गेंदें अब बाकी। और नए बल्लेबाज, एक और आक्रामक बल्लेबाज टॉर्पेडोज खाना के अक्रम इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और वो इस वक्त सामना करेंगे आशु की गेंदों का। तो आशु अपनी एक वाइड फेंकने के बाद अपनी अगली गेंद बेहतर फेंक चुके, एक विकेट प्राप्त कर चुके हैं सिनान के रूप में। और इस वक्त अक्रम सामना करने के लिए तैयार उनकी गेंदों का। आशु दाहिना तो बढ़ता विकेट अक्रम के लिए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए रनआउट का खतरा, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। तो रिवर्स शॉट इस वक्त ऑफर किया था शायद, तो इस वजह से अंपायर से सही गेंद घोषित करते हुए, और यहां पर विकेट गिर चुका है अक्रम का। तो एक और विकेट गिर चुका है, 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर 39 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। धीरे धीरे मैदान पर रोशनी यहां पर कम होते हुए 5:20 शाम के बच चुके हैं, और इसलिए मैं दरख्वास्त, रिक्वेस्ट, निवेदन करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। प्लीज कंटिन्यू द मैच एज सून एज पॉसिबल। और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो रंजीत इस वक्त बल्लेबाजी पर उतरते हुए, जहां तक रंजीत का सवाल है, पिछले मैचेस में गेंदबाजी के जरिए उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिया था, और यहां पर देखना ही है कि इस मैच में उनकी पारी में जो गेंदें बचे हुए उन गेंदों पर वो किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाते। फिलहाल वो नॉन स्ट्राइक लाइन पर मौजूद, और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए बासीत। और आशु अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, विकेट कीपर ने विकेट जरूर झटका है, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, और इस वजह से सब कुछ
सुरक्षित उनके लिए। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, 7th एंड लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज आशु इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बासित इस वक्त सामना करते हुए आशु की ओवर की अगली गेंद का फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर तब विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज बासित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड करते हुए और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर प्राप्त कर लिया। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया था। डीप मिड विकेट पर अंतिम क्षण में गेंद को फील्ड करते समय हड़बड़ाहट में गेंद से नजरें उन्होंने हटा ली फील्डर ने और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई दोबारा जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास समय था कि वो दूसरे रन के लिए मुड़ सके अपने और अपने स्वस्थान पर पहुंच सके। 41 रन 5 विकेट के नुकसान पर कुल मिलाकर अब उनकी पारी में 2 गेंदें बाकी। जस्ट 2 balls नाउ लेफ्ट इन द इनिंग्स। और आशु एक बार फिर से तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज बासित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, गेंद को खेला तो जरूर जमीन के सहारे डीप मिड विकेट पर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। क्लेवर थिंकिंग, इंटेलिजेंट थिंकिंग, लेकिन अपना विकेट नहीं बचा पाएंगे यहाँ पर। हालांकि क्रीज पर रुके रहे जब तक बासित स्ट्राइक रेंज पर पहुंच सके, लेकिन विकेट कीपर ने गेंद को रिसीव करने के बाद थ्रो किया नॉन स्ट्राइक रेंज पर और आसानी के साथ यहां पर गेंदबाज रन आउट करते हुए 1 रन उनके खाते में जोड़ेगा। 42 नाउ, जस्ट अ लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। नए बल्लेबाज अश्विन का आगमन यहां पर हो चुका है। फिलहाल वो नॉन स्ट्राइक रेंज पर मौजूद और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज बासित उनके पारी की अंतिम गेंद का। और इस बीच आशु पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार। उनकी द लास्ट बॉल ऑफ their innings is now coming up. आशु दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बासित के लिए पारी की अंतिम गेंद। यह गेंद ड्राइव के स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, लेकिन गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद बावजूद वो सीमा रेखा को इस वक्त टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। ऑफ द बैकफुट गेंद को इस वक्त स्कूप किया था खूबसूरती के साथ और स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेलने में सफल। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए विकेट से हटते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया बासित ने। थोड़ी सी विड्थ थी गेंद पर और इस विड्थ को कबूल करते हुए गेंद को स्कूप कर दिया खूबसूरती के साथ। बेहतरीन टाइमिंग्स के साथ 4 रनों के लिए डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के एप्पल प्लाई बोर्ड पर गेंद टकराते हुए दोनों फील्डरों को वंचित करते हुए और इस चौके के साथ दे स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड। द इनिंग्स इज द फोटो प्रोड्यूस कर दे finished well with 46 for the loss of 6 wickets in the stipulated 7 overs, and now they set a victory target of 47 for Nazar 9th block to clinch the prestigious YFC Trophy 2023 title. और यहाँ पर 47 runs they have to score for victory, under 7 runs per over they have to score. और देखते हैं यहाँ पर 47 रन उन्हें बनाने निर्धारित 42 के 42 डिलीवर्स दे हैव टू स्कोर 47 more runs 47 runs for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं कि नजर 9th ब्लॉक के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। फिलहाल उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी और निस्संदेह सतीश एब्सोल्युटली good piece of batting performance came from the top of Toscana. Under this condition they finished well with 47 for the loss of 46 for the loss of 6 wickets and 47 the target for नजर 9th ब्लॉक। और देखते हैं क्या होता है उनकी पारी में। छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे माइक्रोफोन पर जब यहाँ पर नजर 9th ब्लॉक की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद। थैंक यू ಗೋಪಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬಿ ಅಬ್ರಾಮ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಜನಾಬ್ ಅಶ್ರಫ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ನಜೀರ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ MK ಶೌಕತ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಫೀಕ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಟಿಂಬರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು 4 ದಿವಸದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂಥ ಹರೀಶ್ ಕೇರಳ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಅನಂತನದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಇವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತಹ ಹರೀಶ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಗಮಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗೋಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿನಿಶ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವೆಲ್ the shackling start, but in the middle of the match, in the middle of the innings, a little bit struggling there in the middle. But I think it's Bashit, one who got a finishing touch. He's got a finishing touch for the Torpedoes Khana. The last ball of the over, when he played an exquisite cover drive, beautifully played down to deep cover boundary for boundary. So with that boundary, they got the good run. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬಿ ಅಬ್ರಾಹಂ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಸರ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ organizers for Dr. Sebi Abraham. And so all we can see that the dignitaries in the main stage enjoying the game of cricket. And here is a final match is in progress. The target in front of Nazar 9th block is 47 in the first ball. They got a first run, and second time in this over, Sharan will go into bowl the second ball. And batsman Nihal is a hero so far in this tournament for his team. Nihal facing Saran, just across the line of the deliveries, tried to swing that one, missed it completely. All we can see that intention is very clear from the batter that he wanted to take the advantage of the power play. Of course, it's not so easy to take the advantage of the power play because you're playing against one of the best bowler as far as Andhra cricket is seen in the last 3-4 years. And this is Sharan, definitely will go into test the temperament of the batsman. Again Sharan, right arm over the wicket, ball Sinan this time going for the big shot, missing it completely, but the bowler not missing the opportunity to hit the stumps. The first wicket is back into pavilion of Nazar 9th block. It is definitely going to be a big fish in the net for Torpedoes Khana. The danger man departs. Sinan, little bit in aggressive mind, but you can't see the face in the boiling water rather than the warm water. They need to see that. Of course, they need to see the line of the delivery, which delivery which is suitable for the big stroke. But this is not a delivery for the big shot. This is the one delivery need to give the respect. And he just wanted to play against the line of the delivery. Swings his bat, missed it completely, and the bowler Sharan has got a wicket here. Sinan back into pavilion, and 9th block have lost their huge wicket in the name of Sinan. One for the loss of one wicket. Absolutely, it's a jam-packed stadium out here in this most beautiful Nanthoor Bajal ground of this prestigious YFC Trophy 2023, which is proudly organized by YFC Bajal Nanthoor Mangalore in association with the Little Kingdom of Phones Bahrain. And all we can see that after the 3 very successful day of cricket, we are into the final day and decider day of cricket tournament. And wait and see which team will going to become the champion and which team will going to most luckiest one to lift the very prestigious YFC Trophy 2023. New batsman in. The walking towards the middle is none other than very experienced campaigner for the side of team Nazar 9th block. Imran came into middle, and wait and see how well Imran will go into convert his experience into performance. It's so important. It's not important that how much your eyes got experience behind you, but converting that experience into performance when in a difficult time, it's so important. And wait and see how
Imran will going to get the big score for his team. As Sharan right up over the wicket, balls outside the line of off stump. Beautifully bowled there by Sharan, just galvanizing his level of confidence after he picked the wicket of Sinan. He's looking so different and looking so confident, and he bowls outside the line of off stump and defeats the bat of Imran. So for good over is in progress here from Sharan there as he bowls a right arm over the wicket away from us. Went for the reverse sweep. This time a ball straight to the hands of field. A chance of rounded in the non-strikers end, but not quite enough. Not quite enough and not quick enough there from the field. Of course, you can't question the ability of that man. Ashwin Kumar is one of the best fielder in that region, backward point region. But sometimes I think it's not so easy to stop the single because both the batters run very quickly between the wicket, and that's so that they completed the single. So Imran is up the mark with a single, 2 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Taslim, one of the tremendous striker of the ball, will going to face next delivery of Sharan. Sharan drives that one, but little correction. It's Taslim drives that one. Chance of run out, but directed which is required, but ball just misses the stumps. Taslim survives. One more single is been taken. Fantastic over is comes in and there from Sharan. The kind of over which is required for Torpedoes Khana, because it's not so easy, isn't it, Gopi? The coming and come and ball in the power play overs when the batsmen are looking so aggressive frame of mind. I think Sharan did a great job. The bowling that quiet over, just 3 runs and a wicket. That means Torpedoes Khana has got a good start, but ninth block has got a shackling start. एग्जैक्टली सतीश, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. यहाँ पर शरण ने अपने काबिलियत के अनुसार गेंदबाजी की, अपने क्षमता के, अपने एबिलिटी के अनुसार गेंदबाजी की है, और जो बेहतर शुरुआत की जरूरत थी, उनके शुरुआत की अपेक्षा थी उनके टॉर्पेडोज खाना के कप्तान को, उस उम्मीदों को, उस अपेक्षाओं को पूरी तरह साकार किया एक बेहतर शुरुआत के जरिए गेंदबाजी में. सिर्फ 3 रन उन्होंने पहले ओवर में प्रदान किए और एक विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया. और निस्संदेह जैसा कि आपने फरमाया, ये एक धीमी शुरुआत इस वक्त टॉर्पेडोज खाना के लिए और एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर, धीमी शुरुआत नजर 9th ब्लॉक के लिए और एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी में इस वक्त टॉर्पेडोज खाना के लिए शरण यहाँ पर दे चुके हैं. Absolutely, Gopi. After getting a very good start from the ball, wait and see as Yagnesh is brought in. Ignesh is brought in. A lovely shot, beautifully driven. No need to run for that. No need to friend. What a fantastic! It is a glorious straight drive there from Taslim. He's the one, just like I mentioned about, he's the kind of batsman. He's not really bothered about which bowler is facing. He only sees the ball. He not sees the which bowler is facing. He only sees the which ball he need to punish, and he punished that one quite beautifully. This is what you call the brave and gutsy batting there from Taslil. And this is one of the speciality of Taslil. I am watching him in the last 2 years as a commentator. He is the one. He's always going to be a danger batsman for any opposition. Just see the way that he's hitting the ball. It's been outstanding cricketing stroke, isn't it? Nothing wrong with that. Nothing wrong with that line of the delivery. The batsman picking up that spot so good in the occasion, and the timing is exquisite in the occasion down to deep long on region. Whenever the batsman playing that such kind of cricketing stroke, Gopi, with one of the most beautiful and delightful stroke to watch when batsman hitting straight down the ground over the head of the bowler, and that boundary definitely takes 9th block back into this track of winning this match. 7 for the loss of 1 wicket. Here is Yajnesh, right arm bows, left arm bows over the, oh, lovely shot, beautifully driven. This time is square of the wicket, down to deep extra coverage, and 2 fielders behind the ball, and at last one of the fielders just winning the race against the ball, and they got that one just inside the boundary line. Looks like the Bashir is a man, is running behind along with Sinan, and one of the fielder is able to cut it off. Taslil just opening up a little bit in the second over. You know exactly, if you wanted to win the match, they need to capitalize this over, because after getting a slow start in the first over, they need to get some score in this last over of the power play. And very interesting to see the field set, Gopi. Everyone looks like is standing. Looks like that 4 friends standing together. This doesn't look like it's going to be a fielding set. Again, up and over, down to deep compartment region. Again, the chase here for the fielder. Again, they stops the boundary. Again, the batsman completed a couple of runs. What a cricket is going on here. What a brave and gutsy batting there from Taslil. Absolutely. He just sending a strong message for the opposition that they are not giving this match very cheaply for you. They will definitely going to fight hard for the victory. What a magnificent strike once again there from Taslil. Just a little bit with his offward outside the run of offhand, and batsman going after that one and getting a couple of runs. Now, straight away pressure, Gopi. Absolutely pressure now for the captain.
Imtiaz, 11 on the board for the loss of 1 wicket. Now look at the Imtiaz quickly coming to Yajnesh saying something. Of course, man, don't worry. Of course, the two-stroke. Of course, the batsman is played very well, but you need to restrict another remaining deliveries. It's so important for Torpedoes Khana. Otherwise, Taslil definitely is looking very dangerous in the middle. Taslil will go into face Yajnesh, bowling left arm. Away from us, over the wicket, beautifully balled just around the legs. Taslil once again going for the swing of the bat, but missed it completely. But wicket keeper missed it completely, so that umpire signaled this by one more addition to total addition of that single score numbers on to 12 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. The crowd absolutely jam-packed stadium, and it looks like it's going to be a festival atmosphere out in this most beautiful cricket ground. Each and everyone is enjoying the game of cricket. Doesn't look like it's going to be a Wednesday. It always looks like it's going to be a holiday. It looks like it's a weekend, Sunday. Look at the crowd here, absolutely. All we can see that in the right and left of our commentary box, they're enjoying the game of lovely cricket and lovely final. And more than live here, the live telecast from King Sports, 1.6k viewers enjoying the game of cricket in YouTube channel, the live telecast from King Sports. So one more single is added to total. With that single score numbers on to 13 for the loss of 1 wicket. Runs are coming very freely in this over. That means it's going to be a very good match, and everyone knows that. They don't know that the two very good teams. The two very good teams, one team which is came from the Mangalore pool, the one team which is came from the local pool, but never looks like the ninth block came from the local pool. They're playing like a champion, but still long way to go. Still, it's a long way to go to become the champion. It's a 13 for the loss of 1 wicket. Yajnesh, left arm bowls outside the non-flex stamp. Taslim again. That was a huge, juicy delivery outside the non-flex stamp. The batsman just missing the golden opportunity to swing his bat, but by call by umpire. Wicketkeeper is not up to the mark. One more over completed of completion of over number 2. Chasing 47 to win this match. 14 for the loss of 1 wicket. And Gopi, 3 from the first. That means 11 from the second. And that 11 runs, I think, brought another ninth block strongly back into this game. एग्जैक्टली सतीश, ये ओवर में 11 रन बने यज्ञेश के ओवर में, और खासकर तस्लीम ने 8 रन 9 रन उन्होंने बटोरे. तो यहां पर इस ओवर की बदौलत ऐसा कहना पड़ेगा नजर नाइन्थ ब्लॉक इस मैच में वापस आ चुका है. 7 रन रिक्वायर्ड रन रेट था, लगभग 7 रन की प्रति ओवर के औसत से उन्हें रन बनाने थे जब उन्होंने पारी की शुरुआत की थी. लेकिन पहले ओवर में 3 रन बनाने के बाद रन रेट सीधे जा पहुंचा था 7.34 रन प्रति ओवर. उसके बाद 11 रन इस ओवर में बने, और उसके बाद अब रिक्वायर्ड रन रेट रुक चुका है. बनाने 5 ओवर में 33 रन बनाने हैं, 33 दे हैव टू स्कोर, और रिक्वायर्ड रन रेट है एग्जैक्टली 6.60 रन पर ओवर. तो मैच का जहां तक सवाल है सतीश, इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन. और निस्संदेह यहां पर ये साझेदारी 2 या 3 ओवर तक अगर टिकती है तो निस्संदेह यहां पर खतरा पैदा हो सकता है टॉर्पेडोज खाना के कप्तान के लिए. Absolutely, Gopi. Why not? Because after seeing the Taslim is looking pretty good in the middle, but I think Gopi, the Taslim need to carry his business a little bit over to 3 to 4 hours. That not going to be a very, very good for a team on ninth block. At the same time, if Torpedoes Khana wanted to back in this game, they desperately needed this man. Taslil looking very dangerous. Now Sharan will going to continue from the commentary box, and second over of his quota, right arm around the wicket bounce. Taslil, this time it is reverse. Oh my goodness! Yashnesh dropped the catch. Catches win the matches. What is the greatest slogan of cricket? Missing the catches means you due to miss your matches. What a great opportunity is missed out by the fielder. Taslil went for the reverse sweep, not really able to keep it down. Ball went straight to the hands of Yajnesh. Yajnesh looks like taken a little bit lightly. Ball slipping out of his hand, and Taslil now becomes a little bit lucky one. Wait and see, can he capitalize this luck to the big innings for his team? Wait and see. It's going to be if the team ninth block will going to become the champion. This one definitely going to be a huge miss for the fielder. Here is a Sharat bowling right arm
Over the wicket passes to Imran. Imran going for the expansive drive, but misses it completely. Then wicketkeeper behind the stump. Ashraf did the rest, and there is no chance at all for any run. This kind of dotted delivery is much required for Torpedoes Khana, but at the same time, sensible batting which is required for team Nazar ninth block to win this match. Again, bowler's back drive, beautifully driven. Sweet sound coming from the bat, indicating that Imran hitting the ball right from the middle of the bat, just for the single, and before the Akram from the deep long on to cut it off, the ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 16 for the loss of 1 wicket, chasing 47 to become the champion of this prestigious YFC Trophy 2023. What a fantastic tournament is progressing here. The big final, the mega final. Tasleel drives that one, beautiful. He's looking confident. He's confident. Looks like he's seeing the ball like a football now after getting after spending a lot of time in the middle, and he's now just wanted to carry his business, and wait and see how long we'll go into carry his business. 17 for the loss of 1 wicket. Imran back on strike, and here is again bowler Sharan. Reverse stroke, single-handed reverse stroke there from Imran, but unfortunately we will going to get a single for that, because just I mentioned earlier that in this particular cricket round you won't get many runs behind the wicket, just a single. So with that single, scoreboard numbers on to 18 for the loss of one wicket. 29 which is required, and 25 balls. This time Imran going over and he got the distance. Oh, what a magnificent strike there from Imran. Look at the supporters. Look at the support of Nazar 9th block there on their feet. Why not? This is a terrific shot. Absolutely glorious hitting. ದಯಮಾಡಿ Nazar 9th block ತಂಡದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. We are understand your excitement, we are understand your feelings, but here is what a fantastic Gopi, what a fantastic, just like what in the innings of Torpedoes Khana, the batsman Manjunath hit 1-6 down to square leg. The similar kind of hit, but it's a different version, longer version, but the treatment is the same, isn't it? It just looks like just a stroke from the cannon. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर जिस तरीके का स्ट्रोक इमरान ने लगाया था काबिल तारीफ है. ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड स्टैंड एंड डिलीवर्ड डाउन टू अ लॉन्ग ऑफ. और लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे, जीतोड़ कोशिश जरूर उन्होंने की अपने ऊपर की ओर छलांग लगाकर गेंद को लपकने की, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर. और ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, ये छक्का इस वक्त नजर 9th ब्लॉक को इस मैच में वापस ला चुका है. दे आर स्ट्रांगली बैक इन द मैच एंड नाउ 23 required of 24 deliveries, and now it could be anybody's game at this situation. Absolutely, Gopi. It's going to be anybody's game. That means the match is evenly poised. It's going to be anybody's game because these two batters are really playing like a champion. But Ashwin, the masterclass, the magician, the magical bowler, brought into attack. Right number over the wicket. Bounce, drives that one down, deep back on square leg region. Looking for the second. In comes the throw from, of course, he's a very good fielder. He's a very good fielder. Against his throwing arm, it's going for the second. He's always going to be asking for trouble. Hafiz Katibal announcing rupees 500 for every boundaries and 1000 rupees for every sixes for the batsmen of Nazar 9th block. KFC Krishnapura. The wide call by umpire. Now we can see that the straight away pressure onto the bowler. Once again, one more single. 26 for the loss of 1 wicket. 21 more runs required for the wicket. This time, much better. Little bit inside the line. Imran not impressed with the decision, but umpire is so experienced, Iqbal, seeing the line of the ball and saying that that was a fair delivery, just legal delivery. This time off stop by the square leg fielder Imtiaz, the captain of the side, putting 100% in the field, but not quite able to stop the single from these two batters. With that single, score moves on to 27 for the loss of 1 wicket, and another 20 runs required for the victory in 21 deliveries. What a match is going on. Absolutely fantastic match. It's going to be anybody's game, and a team which is going to handle the pressure.
that team will going to win the match. Here is Ashwin searching for the wicket, searching for the dotted delivery, went for the reverse sweep, dotted delivery. Taslil wanted to play the unorthodox cricketing stroke. Of course, so far he's been so good playing an orthodox cricketing stroke, played some classical cricketing stroke, but this time he wanted to play the unorthodox in the sense he tried to play the reverse stroke, missed it completely, and Ashwin bowled a very important dotted delivery. That dotted deliveries is much required for Torpedoes Khana, but just like I mentioned earlier, sensible batting which is required for ninth block. This time Taslil wanted for the big shot, ball went towards a deep fine leg region in the form of by. After ball hitting the leg of the wicket keeper, then ball ballooning up in the air down to deeper fine leg region for a declared area for the single. The with that single scorer numbers on to 28 for the loss of one wicket. 19 more runs required for the victory in 19 deliveries. So far 43 boundaries and 26 are scored in this tournament, and but all we can see that in this particular match there is a 1-6-2 sixes from both the teams in their both the innings. Ashwin right arm over the wicket. This time Taslil wants a big shot and he gets the fielder. This time Yadnesh not missing the opportunity. This time Yadnesh is not missing the opportunity. The same fielder who drops the catch in the second over, Gopi, and this time Yadnesh himself taking the catch. And will it going to open the gate here for Torpedoes Khana, Gopi? The wicket of Taslil maybe is looks like shown a little bit of urgency, or it was a quality of Ashwin's ball. That is a tempting delivery outside the line of stump, inviting the batsman to go for the big shot and taking the invitation, and then the fielder taking that good catch. Altogether, Gopi, is going to be a turning point of this match. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर अश्विन की चतुरता की वजह से यह विकेट गिरा है. यहाँ पर अश्विन ने जस्ट चेंज ऑफ पेस, ही बोल्ड अ स्लो डिलीवर जस्ट अ लिटिल बिट एट द लास्ट मोमेंट, और इस धीमेपन को बल्लेबाज समझ नहीं पाए. गेंद को उछाला जरूर लेकिन नॉट क्वाइट मिटिगेट एट द लास्ट मोमेंट, और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर यज्ञेश ने इस कैच को लपक लिया. हालांकि दूसरे ओवर में कैच जरूर छोड़ा था उनका, लेकिन इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की. आसान सा मौका था. अब 18 गेंदें बाकी है, रन से चाहिए इस वक्त 19 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज, और मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है. गेंदबाजी पर उतरते हुए रंजीत का जहां तक सवाल है, इस श्रृंखला के मैचेस में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखा है, और यहां पर देखना है कि उस सफलता के सिलसिले को यहां पर वो आगे बढ़ा पाते हैं नहीं. और इस बीच अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज का आगमन हो चुका है. मुब्बा इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है. इमरान और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद पहली गेंद स्कोर होता विकेट, गेंद को स्कूप किया लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद. कवर पॉइंट पर शरण जब तक गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का. 17 गेंदें बाकी है, 18 रन और चाहिए. 18 टू गेट फ्रॉम 17 डिलीवरीज, एंड दिस इज एन absolutely fantastic final match is now going on here of YFC Trophy 2023, which proudly organized by YFC Bajal Nanthoor मैंगलोर. और इस बीच गेंदबाज रंजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिना तो बढ़ता विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, गेंद इस बार हल्के से गेंद को ड्राइव कर दिया. सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद को इस वक्त खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और जब तक वहां पर फील्डर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 30 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है, और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद इस बार एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए गेंद को उछालना चाहता चूके, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. एक गेंद व्यर्थ. ऐसे ही चंद डॉट गेंदों की और जरूरत इस वक्त टॉर्पेडोज खाना के गेंदबाजों को कमबैक करने के लिए, और रनों की सख्त दरकार इस वक्त नजर 9th ब्लॉक के बल्लेबाजों को अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होने के लिए. कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा, गेंद और बल्ले के बीच कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है. रंजीत एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, और मुब्बा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. रंजीत हमसे दूर वाले छोर से दाहिना तो बढ़ता विकेट, गेंदबाजी करते हुए गेंद टॉप एज, गेंद टकरा चुकी है, फील्डर ने गेंद नहीं, जी नहीं, कैच यहां पर छूट चुका है, और इस बार ओवर थ्रो, लेकिन इस बार रन आउट हो सकता है, लेकिन इस बार भी बल्लेबाज बच चुके हैं. तो एवरीथिंग हैपन इन दिस ग्राउंड, और जहां तक
सवाल है, यहाँ पर मौका था कैच का और दूसरे बल्लेबाज के लिए मौका था रनआउट का, लेकिन इन दो मौकों में भी भाग्य बल्लेबाजों का साथ देता हुआ और यहाँ पर एक रन उनके खाते में जुड़ चुका है। इट्स ऑफ द बैट और स्कोर एक रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 14 balls remaining in their innings, 16 more runs now they have to score for victory. It could be anybody's game at this situation. The pressure is now building up on both sides. तो इस वक्त गेंदबाज इस वक्त कुछ सलाह प्राप्त करने के बाद उनके टीम के अनुभवी गेंदबाज अश्विन द्वारा रंजीत गेंदबाज है इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज इमरान। और जहां तक इमरान का सवाल, मुब्बा माफ कीजिए, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार इमरान नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद, अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन पारी यहां पर खेलते हुए और 11 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो इस वक्त मौजूद नॉन स्ट्राइक रन पर। और गेंदबाज इस बीच तैयार रंजीत दाहिना तो बढ़ता विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए मुब्बा के लिए ये गेंद बॉर्ड ऑफ हिज लेग्स और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था और गेंद काफी तेज रफ्तार के साथ सीधी रफ्तार के साथ आई और यहां पर उनका विकेट उखड़कर गिरता हुआ, देखिए यहां पर किस तरीके से यहां पर हुआ था और ये गेंद फेंकी थी क्रीज के कोने से, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद स्वीप करना चाहता, चूंकि गेंद उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे ऑफ स्टंप को उखाड़ कर ले गई और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। तो यहाँ पर मुब्बा का विकेट गिर चुका है, निर्णायक मोड़ पर एक सफलता इस वक्त अर्जित कर चुका है और मैं समझता हूँ सतीश यहाँ पर टॉर्पेडोज खाना के गेंदबाजों को इस वक्त कम बैक करने के लिए ये विकेट काफी सहकारी हो सकता है। Absolutely, Gopi, the man with the golden hand and the man who turned the match around in the semi-final when he bowled magnificently against Sridevi cricketers Japo, and then same man now in the big final wanted to do something special for his team and rightly, Gopi, that wicket will going to open the gate for Torpedoes Khana, but not completely all over in this particular match. It's going to be anybody's game because 16 to get from 13 balls, Gopi, against Torpedoes Khana. Still, I want to say that ninth block have to work hard for each and every runs. बिल्कुल सतीश, हर रन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत मुशक्कत उन्हें करनी पड़ेगी। दे हैव टू वर्क हार्ड और देखते हैं यहाँ पर वो आने वाले गेंदों में क्या करते हैं, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका इस वक्त उनके पास जरूर है। और इस बीच गेंदबाज रंजीत इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों बढ़ता विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद साहिल के लिए लेग स्टंप पर आती हुई गेंद विकेट कीपर चुके रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित और इस बीच सही गेंद घोषित और इसी के साथ ओवर नंबर 5 की समाप्ति हो चुकी है। तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ओवर केम स्टूडेंट, just 3 runs in this over conceded by the bowler. In fact, now they have to score 14 runs in 12 balls. That means only 3 runs conceded by Ranjit in this over, and under or मैं कहूँगा सतीश under pressure this is a fantastic piece of bowling bowled by Ranjit in this over. Absolutely, Gopi. Under pressure is bowled magnificently. That's what I said, Gopi. Is a man with a golden hand. And the previous, the semi-final also is bowled fantastically for his team. And now he's continuing that job. I think this man, really, what we're talking about, Ranjit is a man who's really got his team back into this game. But still, Gopi, it's match is going to be anybody's game. Needed another 16 runs in 12 balls. Looks like now the Imran is the only off. Looks like he's the only off for team 9th block to winning this match after seeing his 1-6 which is came in the last 4th over out of 3rd over. That kind of the stroke which is badly required in small time. They needed one big shot. Exactly, सतीश, देखते हैं क्या होता है। पहली गेंद अश्विन की गेंद को ड्राइव करती है इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर यहां पर पहुंचते हुए आक्रमण नहीं मंजूरात है, फील्डर वहां पर एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 32 रन, 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 15 टू गेट, 11 बॉल्स टू गो और निस्संदेह कांटे का टक्कर हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके का फाइनल होना चाहिए उसी तरीके का फाइनल यहां पर होता हुआ और दर्शकों को भरपूर मनोरंजन यहां पर इस ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच के दरमियान इस वक्त मिल रहा है YFC ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत। और यहां पर अश्विन
अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। इमरान ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, साहिल स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 15 रन चाहिए, 14 फॉर टाई, 15 फॉर विन, 11 बॉल्स रिमाइनिंग इन द इनिंग्स। और अश्विन एक बार फिर से तैयार, दाइनाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए साहिल के लिए यह गेंद, इस बार गेंद को उछाला, नॉट क्वाइट मिड विकेट, गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाती हुई 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 14 टू गेट, इनफैक्ट 10 बॉल्स टू गो इन देयर इनिंग्स। निस्संदेह इस वक्त सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की सख्त जरूरत है यहाँ पर नजर 9th ब्लॉक के बल्लेबाजों को। और जहां तक सवाल है टोरपेडोस काना का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतरीन गेंदबाजी। तो यहाँ पर चौके, एक चौका या छक्का इस वक्त लगता है तो निस्संदेह इस मैच में नजर 9th ब्लॉक वापस आ सकता है। यह गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, फील्डर गेंद तक पहुंचे, क्लीन कलेक्शन, थ्रो पहुंचा, बेहतर फील्डिंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डिंग। अगर थोड़ा सा भी मिसजजमेंट होता तो बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े यहाँ पर, लेकिन क्लीन कलेक्शन और दबाव तले अंडर प्रेशर यहाँ पर बेहतर फील्डिंग उन्होंने की। 1 रन का इजाफा हो चुका है और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर, 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और जहां तक नजर 9th ब्लॉक का सवाल है, हर छक्के के लिए 1000 रुपए और हर चौके के लिए 500 रुपए का नकद पुरस्कार घोषित किया गया इस वक्त जनाब हफीज द्वारा। और देखते हैं क्या नजर 9th ब्लॉक के ये दोनों बल्लेबाज उस इनाम का हकदार बन पाते हैं या नहीं। फिलहाल उस इनाम से भी ज्यादा इस वक्त उन्हें जीतना जरूरी है। और यहाँ पर यह गेंद, इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर, मिसफील्ड इस वक्त, कोई फील्डर वहां पर नहीं, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, जब तक गेंद को बैकअप किया जाता शरण द्वारा, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। हर तरीके का क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2 रन यहाँ पर बने, रन से इस वक्त चाहिए नजर 9th ब्लॉक को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और यहाँ पर 2 रन बाई के रूप में बटोरते हुए और इन 2 बाई के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, 36 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस ओवर में कुल मिलाकर गेंदे 4 फेंके गए हैं, यानी 8 गेंदे अब बाकी हैं, रन से चाहिए 11, 11 टू गेट फ्रॉम 8 डिलीवरीज। हियर वी गो, अगली गेंद लेकर तैयार अश्विन, दाहिना ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहे, विकेट कीपर चुके गेंद और इस बार एक बार फिर से विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूक गई है, लेकिन एक बार बल्लेबाज के पास मिलेंगे सिर्फ 1 रन बल्लेबाज को। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 37 रनों पर, 10 रिक्वायर्ड ऑफ 7 डिलीवरीज, 9 फॉर टाई, 10 फॉर विन एंड equal chance for the both teams at this situation. What a fantastic match. What a fantastic grand finale match is now progressing here. The equal battle is now continuing here. The pressure is now building up on both sides. और दोनों टीमों के खिलाड़ी इस वक्त विजय के लिए जीतोड़ कोशिश करते हुए और यहाँ पर इस मैच के रोमांचकता का भरपूर आस्वादन करते हुए प्रेक्षक 2.1K व्यूवर्स इस मैच का मुआयना अब तक कर चुके हैं। तो यह बात यह दर्शाता है कि मंगलूर परिसर में अंडरआर्म क्रिकेट कितनी जनप्रियता रखता है। दाहिना ओवर द विकेट, यह गेंद इस बार गेंद को चलना चाहा, चूके इस बीच डॉट गेंद थी, अंतिम क्षण में गेंद को टॉस की थी अश्विन ने, ललचाया था कि बल्लेबाज को स्ट्रोक्स खेल सके, लेकिन इस बार स्ट्रोक्स खेलने में चुके डॉट गेंद। अब सतीश 5 रन इस ओवर में अश्विन ने प्रदान किए, 6 गेंदे बाकी, 10 रन चाहिए। अब ऐसा कहना पड़ेगा कम से कम एक चौका जरूर लगाना होगा अंतिम ओवर में नजर 9th ब्लॉक के बल्लेबाजों को कम बैक करने के लिए। ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋಪಿ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರು ದಯಮಾಡಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರ್, ಇದು 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟ ತನಕ ನೀವು 4 ದಿವಸ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ 1 ಓವರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. One more big announcement came here for Imran. The Rizwan KFC announcing 5,000 rupees for Imran if he able to win the match for his team. And right, Gopi, it's going to be exciting match, and more than anything else, it's going to be anybody's game. One big shot will going to change the complexion of this match. Exactly, Satish. एक करारा स्ट्रोक्स इस वक्त चाहिए, दाहिना राउंड द विकेट, ये गेंद इस वक्त स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंचे फॉरवर्ड शॉट लेग पर, विकेट कीपर पहुंचे लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाया, लेग बाय का इशारा। अब रन से चाहिए 9, गेंदे बाकी है 5, 8 फॉर टाई, 9 फॉर विन, 5 बॉल्स रिमाइनिंग। और यहां पर पहला बेहतर गेंद इस वक्त फेंक चुके हैं गेंदबाज सिनान। तो 6 पड़ावों में से
पहला पड़ाव इस वक्त पार कर चुके हैं। अब सिर्फ 9 रन चाहिए विजय के लिए और गेंदें बाकी है सिर्फ 5। तो यहाँ पर और 5 पड़ावों को गेंदबाजी के जरिए इस वक्त पार करना है। 5 बेहतर गेंदों को उन्हें फेंकना है इस वक्त अपनी टीम को विजय दर्ज करने के लिए। और जहां तक सवाल है नजर 9th ब्लॉक का, तो इस वक्त उन्हें हर गेंद पर कम से कम 2 रन इस वक्त बनाना जरूरी बन चुका है। 9 रन, 5 गेंदें बाकी और इस बीच गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। तो अपनी अगली गेंद लेकर सिनन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद लेकर तैयार। और इस गेंद पर इस बार गेंद को खेल दिया डीप विकेट पर, गेंद जाती हुई फील्डर वहां पर पहुंचते हुए 1 रन क्लीन पिकअप। अश्विन का थ्रो पहुंचा, स्ट्राइकर एंड पर रन आउट का खतरा और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। 1 रन यहां पर जुड़ चुका। 39 for 3, 8 to get from 4 deliveries। अब लक्ष्य कुछ हद तक कठिन हो चुका है। Absolutely, Gopi. But just look at the dismissal, Gopi. It was an absolutely fantastic piece of return there from Ashwin, isn't it? Because ball running to the deep mid wicket. Under this condition, neat collection is always going to be a big question raising from the fielder in the deep mid wicket, because they're under pressure and collected that one very neatly. But look at the return. You know exactly. Imran is a danger man. If Darpaskana wanted to become the champion, they needed this man, and fantastic return came from Ashwin then. And Imran, I think it's going to be a big drawback here for the team 9th block. Meanwhile, we have dignitaries so far in this enjoying the game of cricket in the final. Dr. Sebi Abraham and Fuse Montero. So thank you very much, sir, for your grand appearance for this magnificent cricket tournament. And I request Mr. H.S. Anif, please come here and have the seat. On behalf of organizer, on behalf of all cricket lovers, I would like to welcome H.S. Anif in the main stage, for the main stage. धन्यवाद सतीश। तो इस बार 4 गेंदें बाकी, 8 रन चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। एक चौके की जरूरत इस वक्त कम बैक करने के लिए नजर 9th ब्लॉक को। यह गेंद इस बार पैरों पर टकराई, कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए 1 रन मिलेगा। एंड द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 40 नाउ। 3 balls left and 7 runs required. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಬೀಬ್ ಕನ್ನೂರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬೀಬ್ ಕನ್ನೂರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ स्वागतವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. धन्यवाद। और इस वक्त 7 रन चाहिए, 3 गेंदें बाकी और अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा कम बैक करने का मौका जरूर है यहाँ पर नजर 9th ब्लॉक के बल्लेबाजों को। लेकिन कुछ मेहनत मुशक्कत, कुछ ज्यादा मेहनत मुशक्कत की इस वक्त जरूरत है। और गेंदबाज सिनन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार। और दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर मोड़ना चाहा, चूंकि वाइड की मांग की, नहीं कहा अंपायर ने, क्योंकि गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। अब इक्वेशन सीम्स टू बी अ मच स्टिफर फॉर नजर 9th ब्लॉक। 7 required and just 2 balls remaining। और ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम अवकाश, the last chance in front of the batsmen of नजर 9th ब्लॉक नाउ। 7 रन चाहिए 2 गेंदों में और 6 रन टाई के लिए, 7 रन विजय के लिए। दोनों बल्लेबाज इस वक्त बातचीत करते हुए, इस वक्त इनके लिए मरो या मारो, डू और डाई का सिचुएशन की परिस्थिति यहां पर हो चुकी है। और देखना यह है कि इन बचे हुए 2 गेंदों में क्या वो अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं या नहीं। इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछाला, गेंद पहुंची बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, मिल सकता है, दौड़ पड़े, नहीं मिलेगा, रन आउट हो चुका है यहां पर नॉन स्ट्राइकर पर। और अंतिम गेंद बाकी और जरूरत है छक्के की। 6 required of last ball। Will it possible, सतीश? अंतिम गेंद पर छक्का लग सकता है, आप क्या समझते हैं? Why not possible? If you see the history, if you will turn the page of the history, what cricket has got in the international cricket, you will get a lot of example. You will get a lot of example of getting a 6 in the last ball, Gopi. And one more, the oldest example I want to give is the Miyanda hitting Chetan Sharma in Sharjah. That was going to be horrible, expensive. And when it's 4 runs required for the 6, and of course, never forget one more 6 which is came from Dinesh Karthik against Bangladesh in Asia Cup, Gopi. All we can see that a lot of example we can get. But now Sinan is a captain of the side. He will become the
he will become the hero if he able to get the six. But Sinan, after getting a lot of effort in the last over, he don't want to become a villain, and that's going to be a very good, interesting contest between two players, the bowler or batsman. एग्जैक्टली सतीश और यहाँ पर देखते हैं छक्का चेतन शर्मा का उदाहरण आपने दिया और उसके बाद दिनेश कार्तिक का उदाहरण दिया और जो मैच टाई कर चुके हैं शिवनारायण चंद्रपाल और आसिफ मुस्तफा जो पाकिस्तान के अंतिम गेंद पर 7 रन बना रहे थे छक्का टाई के लिए चाहिए था तब उन्होंने मैच को टाई किया था और यहाँ पर सीधे जीत के लिए छक्के की जरूरत अंतिम गेंद पर और यहाँ पर देखते हैं अंतिम गेंद पर छक्का गिरता है द लास्ट बॉल ऑफ द मैच टूर्नामेंट इन फैक्ट इज नॉट कमिंग अप हियर वी गो ये गेंद उछालना था चूके दैट्स इट Torpedoes Ghana become the champion of YFC Trophy 2023, defeating in a nail-biting finish by 5 runs. And Nazar ninth block finished with runners of this competition. So fantastic final match has been came to an end. Kyo Satish? Absolutely, Gopi. It was a fantastic final, the kind of final which is a crowd and spectators loves to watch. Even I think the chief guest they are enjoying this game of cricket. I'm sure that they're definitely going to enjoy. They really enjoy this game of cricket. But altogether, Gopi, the winning and losing is a part of cricket. But one has to lose, one has to win. But even Nazar ninth block, they lost the match, but they won the heart of cricket lovers because of their brave and gutsy that they try to chase against one of the better team, the better ranking team, and it's not a easy one for Nazar ninth block, but they played a really heroic defeat for them, and nevertheless, congratulations for the winners, congratulations for the runner-up. So that's it for the mega final. Congratulations, Torpedoes Ghana, the becoming the champion of YFC Trophy 2023 Season 2, which is proudly organized by YFC Bajal Nanthoor and in association with the Little Kingdom Phones Behrin. And thank you very much for the congratulations for the winner, congratulations for the runner-up.
Check, check, hello, check. Welcome to the presentation ceremony, the post-match presentation ceremony of this prestigious YFC Trophy 2023. Meanwhile, I request two finalist team, ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೆ ನಜರ್ ನೈನ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಂತ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಜರ್ ನೈನ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Nazar 9th block. All the players, please have a seat.
ಆಸ್ವಾದಿಸಿದಂತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಗೌರವ ಅಂತ ತಿಳಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂತ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ, ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ YFC ನಂತೂರ್ ಇದರ ನಜೀರ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮವರೇ, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ಸಲ ನೋಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಅವರು ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಜನಾಬ್ ಅಶ್ರಫ್ ಬಜಾಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ presentation ceremony. I request Naushad of YFC please come forward. ದಯಮಾಡಿ YFC ನೌಷಾದ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಜಬ್ಬರ್ ಇವರು ಬಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತ ನಜೀರ್ ಬಜಲ್ ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ನೌಶಿ ಫೈಜಲ್ ನಗರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಪ್ಪಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಜೀರ್ ಬಜಾಲ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ರೂವಾರಿ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ನಜೀರ್ ಬಜಾಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ YFC ಟ್ರೋಫಿ 2023. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ, ಆದ್ರೂ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿಯೂಷ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಇವರಿಗೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೇಗ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಹಬೀಬ್ ಕಣ್ಣೂರು, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಬೀಬ್ ಕಣ್ಣೂರು ಇವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. ಇವರಿಗೆ ಅನ್ಸಾಫ್ ಆಫ್ YFC ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಯುತ ಹಬೀಬ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸರ್ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಠಸ್ವರ ನಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಟು ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 6 ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಬಕ್ ಅಂತ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್, ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ and both the teams have done marvelous job. Both the teams are equivalent, I can say. One is winner, then in our system there should be runners, but you are equally good, both the teams, and particularly fielding, the winners fielding and was
ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಥ್ರೋ ಬಿಸಾಡಿದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. ಬಹುಶಃ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಮೋರ್ ದನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. 6 ಹೊಡೆದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಯ್ತು ಇವರ ಕೈಯಿಂದ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಹಠ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು, 2-3 ಮಿಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅವರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಲೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು? ಭಾರತದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಬ್ಬ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ, ನಾವು ಹಠ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ರಾಹುಲ್, KL ರಾಹುಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆ ಅದು. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಯಾರ ಹತ್ರ? ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಗಳ. ಅವರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದು. ದೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ರಾಹುಲ್ ಸೇ, ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬದಿಯ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ವಾಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯ ಬ್ಯಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುವಂತಹ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಒಂದು ಕೊತ್ತಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ, ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಹಠ ಇದ್ರೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ KL ರಾಹುಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮಿ ಇರಬಹುದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ಆಲ್ 11 ಮೈಂಡ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಒನ್. 11 ಮಂದಿ ಇರಬಹುದು, ಗುರಿ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ, ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಪಾಠ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿನ್ನರ್ಸ್, ರನ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಿದವರು ಮತ್ತು ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ನನಗೆ ನಜೀರ್ ಬಜಾಲು, ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಡೈಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೀಸನ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಾವೇ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ವೈಟ್ ಜುಬ್ಬ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅವರ್ ಯೂತ್. ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ನೀವು ಶಬ್ಬಾಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಆಡಿ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 130 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ. ನಮ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಕಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಕ್ತದ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ 1 ಫೇವರೇಟ್ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರೊಬ್ಬ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರು. ಏನ್ ಹೆಸರು ಅವ್ರದ್ದು? ಎಂದು ಕುರೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬಂದದ್ದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಬಹುಶಃ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಹೇಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದ 2 ಟೀಮ್ ಕಾಟಿಬಾಳಿ, ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತವರಿಗೆ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಜೀರ್ ಬಜಾಲು, ಅಶ್ರಫ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. 4 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗೆ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಗೆದ್ದವರಿಗೆ, ಸೋತವರಿಗೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿ, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿನ್ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much, sir, for your inspirational words. Absolutely, they given a lot of examples, especially KL Rahul. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಡನ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನಸು. ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಕಾಣುವ ಕನಸು ಅದು ಕನಸಲ್ಲ. ಯಾವ ಕನಸು ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ವಾ, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಕನಸು ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಕನಸು ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು, ನಾವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಬಟ್ 2 ತಂಡಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್, ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲಾಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಬಿಗ್ ಲಾಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸೋತಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ inspirational words. So straight away ತುಂಬಾ ಅತಿಥಿಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್, ವೆಲ್ ವಿಶಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ straight away we are going to the presentation ceremony. So before going to the individual department of this cricket tournament, first of all we'd like to thanks to the persons, the officials. They are the one responsible for the success of any cricket tournament. If you have got a very good officials, very good umpires, then no doubt at all that tournament definitely going to be a successful one. So that I would like to invite one of the most popular official, umpire, Mr. Iqbal of Gori Young Boys. May I request Mr. Iqbal please come forward. So Iqbal Gori sir, ಇವರ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರ ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ. ಇದೀಗ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗೋರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್. ಗೋರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಗೋರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಇಸ್ ಫೇಮಸ್. ಸರ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೋರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಹ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಗೋರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅವರಿಗೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗೋರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂಪೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೂಡ, ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಸಿರ್ ಬಜಾಲ್. ದಯಮಾಡಿ ನಾಸಿರ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ವಾಸಿಂ ಬಜಾಲ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಬ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಸಿರ್ ಬಜಾಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಆರ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ನಾಸಿರ್ ಬಜಾಲ್. ಇನ್ನೋರ್ವ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆರಿಫ್ ಜೋಕಟೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಜಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಬ್ಯಾಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಬ್ಯಾಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಆಟಗಾರ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆರಿಫ್ ಜೋಕಟೆ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಅನೀಶ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So big hand for Arif Jokate.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು. ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ವಿದೌಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ನಾವು ಊಟದಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ವಾ, ಪಾಯಸ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾದವೇ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ 15 ವರ್ಷದ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಿ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗೋಪಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಗೋಪಿ. ಫೇಮಸ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಸರ್ ನಮ್ದು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸತೀಶ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗೋಪಿ. ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಜಲೀಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಜಲೀಲ್ ನ್ಯೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಗೋಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಲೀಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗೋಪಿ. And now it's a time for Gopi. It's over to Gopi. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 16-17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 200ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೈಲಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಜಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನೂ ಆದಂತ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ in under-arm and over-arm cricket. I request Mr. Satish, please come on to the dais and receive the memento from Mr. Naushad Bajal. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. A big hand for Mr. Satish, fantastic English commentator of under-arm and over-arm cricket. Yes, absolutely Satish. शुक्रिया गोपी.
So after a short break, we are back into this presentation ceremony, and before that, I already mentioned about we need to thank the persons who are responsible for the success of this cricket tournament. One more department is one difficult department. The man behind the screen, the scorer, is a very important man behind the success of this cricket tournament. I request Mr. Faisal, done a great job as a scorer, as a statistician. I request Mr. Faisal to come forward. I request Mr. Siraj of YFC to please present memento for Mr. Faisal for his wonderful work. One of the difficult job. Scoring is not easy. Concentration is very important when, as far as coming to the department of scoring is concerned. So Faisal did a great job so far in this tournament. And thank you very much, Faisal, for your contribution. Next one, it's going to be a huge one. And in our days, there is no live telecast when we are playing. But today, all players are very lucky because ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು live telecast. So first of all, thanks to the organizer giving the live telecast of this cricket tournament. And that live telecast which is made quite beautifully, very quality live telecast from King Sports. I request Mr. Naufal of King Sports, please come forward. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು, ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ತಮಗಿದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ. So wonderful work done by King Sports, not only in India but in overseas countries also. The cricket lovers enjoying the live telecast of this cricket tournament. I request Mr. Nazir. I request Mr. Nazir of AFC, please present this memento for yes. The person who is responsible for the success of this cricket tournament from King Sports. The big hand for King Sports for a quality live telecast of this cricket tournament. Again, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೋಡೋದು ಸೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಿದೆ ಅಂತ, ಮೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಿದೆ ಅಂತ. That is a very key for the success of commentators. And the 4 days, it's a wonderful sound system. ಉತ್ತಮ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತ ಯಾಕೂಬ್ ಇವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೂಬ್, the electrician, please come forward. I request Mr. Nizam of YFC to present his memento for Yakub. ಯಾಕೂಬ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. ದ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸತೀಶ್, ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಯಾಕೂಬ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೂಬ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೇವೆ, ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ 4 ದಿವಸದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲ. 4 ದಿವಸ ಕೂಡ, ಇನ್ನು ಕೂಡ 1 ತಿಂಗಳು ಆಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಅದು ಪಿಚ್. ಸೊ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಕೆಲವು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, 2-3 ದಿವಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಿಚ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸರಗೋಡ್. ದಯಮಾಡಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಹರೀಶ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಚ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಸ್ಗರ್ ಆಫ್ YFC, ಅಸ್ಗರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತಹ ಹರೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. The fantastic job done by Harish for this wonderful cricket tournament, YFC Trophy 2023. Now is the time for the special prizes and special attraction prizes. Now I would like to invite Mr. Siraj ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಹಾಗೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಶಬ್ದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, 2 ಚಪ್ಪಲೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಕೈ ಸೇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಡನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿರಾಜ್ ಆಫ್ YFC. ಅದಕ್ಕೆ ಅಶ್ರಫ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಬಜಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಿರಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ
ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 4 ದಿವಸ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಿರಾಜ್ ಇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಇವು ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಹ ಒಂದು ಮುಖ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಂದನ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಕಳೆದ 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉರಿದಿಂಬಿಸಿದಂತ ನಂದನ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಫೀಕ್ ದ ಟಿಂಬರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ದಯಮಾಡಿ ನಂದನ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಬೇಕು. ನಂದನ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀವು 8 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂದನ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ನ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಎಂತೆಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಂದನ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಇಸ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್. Yes, we are coming to the individual department, and first the individual department is a final match, and in the final match, the man of the match goes to any guess. Yes, competition, whether it's a batsman or the bowler. Absolutely, Ranju is responsible. But ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ 6 ಬಿದ್ದದು. ಒಂದು 6 ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ರನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಟೀಮ್, ಇಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಫ್ Torpedoes Khana become the man of the match. I request the corporator Janab Ashraf, please present this man of the match award for the big man in underarm cricket, tremendous striker of the ball and a killer of the ball. It's known as destructive batsman in underarm cricket. It's none other than Manjunath of Torpedoes Khana. Now it's the next department, best bowler of this tournament. Any guess? Yes, ಆಗೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. It's a Ranjit of Torpedoes Khana, who becomes the best bowler of this tournament. The very difficult time, he coming into ball and he picks some wickets, 7 wickets in the tournament with a very economy rate, absolutely economy rate. I request, one of the guests, please present this best doctor. Yes, Dr. Abib, please present this Abib Khanur. So presents this man of the best bowler award. So now next one, the best batsman of this tournament goes to, once again disappointment. It's a Salam. It becomes the best batsman of this tournament of Shine Bantwal. The magnificent striker of the ball. He is really entertained the crowd by his enterprising cricketing stroke. And Habib will going to present this best batsman award. Habib will going to present the best batsman award. Congratulations for the winner. Now it's a big one, absolutely big one, a king of individual prize, man of the series, man of YFC Trophy 2023. Yes, absolutely, I this start. Absolutely, Isam.
It's not Imran, it's Isham. He's been outstanding throughout the tournament from the bowling, and he is definitely deserves this Man of the Series award. I request Rafiq Kannuru to present this Man of the Series award for. Hello. Now it's a fine time for the announce the runner-up of this prestigious YFC Trophy 2023 Season 2. And a team which is absolutely, they came as underdogs in this tournament, but they played a magnificent game of cricket and deserve the runner-up. I request all the team players of Nazar 9th block, the big hand for Nazar 9th block, they become the runner-up of this YFC Trophy 2023. I request all the players along with the captain, please come forward. I request Nazir, Bajal and all the guests, please present this beautiful trophy along with the medals for each and every players. Yes. So here you go, the most attractive runner-up trophy of YFC Trophy 2023, which is proudly organized by YFC Bajal Nanthoor, Mangalore, in association with the Little Kingdom Phones Bahrain. Now it's a huge one, the big one, the champion of YFC Trophy 2023, the first trophy of the season for Torpedoes Khana, the 2022-23, the first trophy, and Torpedoes Khana, may request all the players along with the captain, please come forward. I request Ivan D'Souza sir to present this the beautiful trophy, very attractive trophy. First of all, it's a medal and a 60,000 cash prize for the winners, 30,000 cash for the runner-up. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel.
and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates.